जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को मो ऑडियो आ वीडियो जदी क्लियर अछि ठीक है समस्त चैट सेक्शन में मैसेज करो सर ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर जदी मो ऑडियो आ वीडियो क्लियर अछि ठीक है समस्त चैट सेक्शन में मैसेज करो सर ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर रेस्पोंड आसनी समस्तंकर आमे जो 60 सीरीज स्टार्ट करिथिले ए 60 सीरीज रो क्लास नंबर केते ना 9 को आज हमें डिस्कशन करिबा टॉपिक ना कोन ना कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टॉपिक ता ना कोन ना कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ए कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे तमन को कोन मु पढेबी ना जेतक इलेक्ट्रिकल मशीन को डिस्कशन करबी जेतक इलेक्ट्रिकल मशीन डीसी जनरेटर डीसी मोटर ट्रांसफार्मर थ्री फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एटा आज रो टॉपिक कोन पढा जीवो ना कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन आज रो कोन थंबनेल ले तमने देखि पारुथिबो कोन ना कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन क्लास नंबर 1 रहिबो कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन आउ टोटल क्लास नंबर ऊपर न रहिबो ए भलिया बहुत भलो सेशंस करिबा समस्त रे आज रो टॉपिक कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन न एटा क्लास नंबर 1 आज रो टॉपिक रे मोर टारगेट कोन रहिबो तमन को बुझेइबार ना योक फर्स्ट डिस्कशन करबी कोन ना योक कोन तापर डिस्कशन करबी फंक्शन ऑफ योक कोन तापर डिस्कशन करबी योक ऑफ मशीन कोन पोल कोर कोन पोल पर्पस ऑफ पोल कोर कोन तापर डिस्कशन करिबा पोल सु कोन तापर डिस्कशन करिबा पोल सु कोन तापर फंक्शन ऑफ पोल सु कोन फील्ड वाइंडिंग कोन ना टाइप्स ऑफ फील्ड वाइंडिंग कोन सीरीज फील्ड वाइंडिंग कोन शंट फील्ड वाइंडिंग कोन कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग कोन ए बोले केतेटा सब टॉपिक ना प्रथम क्लास रे म तुमको 10 टा सब टॉपिक को डिस्कशन करेबी डीसी मशीन नो प्रथम क्लास जहार ना होची कोन ना कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन एटा बोथ डीसी जनरेटर पाए और डीसी मोटर पाए तमन को पाए हेल्पफुल हो जो माने क्लास को रेडी करिया पूर्व समस्त स्टार्ट सेक्शन यस लेको सर रेडी बोली क्लास स्टार्ट करिया तो समस्त रेडी अछो जो माने भी रेडी अछो ठीक समस्त चार्ट सेक्शन ने यस लिखि वेरी गुड प्रथमे देखिबा कोन ना पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन प्रथमे डिस्कशन करिबा कोन पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन सर गोटे डीसी मशीन नो जनरली दुईटी पार्ट्स रहउची गोटे स्टार्टर पार्ट आ गोटे होची रोटर पार्ट गोटे डीसी मशीन नो पिले केतेटा पार्ट सर दीटा पार्ट गोटे होची स्टार्टर पार्ट आ गोटे होची पिले कोन ना रोटर पार्ट ई स्टार्टर पार्ट रे की जाउची ना योक पोल कोर पोल सु फील्ड वाइंडिंग ब्रश गियर आउ टर्मिनल बॉक्स ए भलिया सातटा पार्ट जाउची हमर स्टार्टर पार्ट रे जे पचारिबो डीसी मशीन नो केतेटा पार्ट थाए सर डीसी मशीन नो जनरली दुईटी पार्ट थाए गोटे स्टार्टर पार्ट आ गोटे रोटर पार्ट ए स्टार्टर पार्ट रे जे पचारिबो जनरली को वाइंडिंग प्रेजेंट रहउची ना स्टार्टर पार्ट रे सर जनरली हमर फील्ड वाइंडिंग प्रेजेंट रहउची आ रोटर पार्ट रे को वाइंडिंग प्रेजेंट रहउची ना जनरली रोटर वाइंडिंग रे कोन ना रोटर पार्ट रे जनरली आर्मेचर वाइंडिंग प्रेजेंट रहउची ए रोटर पार्ट रे कोन रहिबो ना आर्मेचर कोर रहिबो आर्मेचर वाइंडिंग रहिबो कम्यूटेटर रहिबो बियरिंग रहिबो शाफ्ट रहिबो की रहिबो और फैन रेगुलेटर रहिबो एबोले 8टा टॉपिक कोन रहिबो टोटल जदी अनुमानिक भाबरे म कैलकुलेशन करिवि डीसी जनरेटर केतेटा इंपोर्टेंट पार्ट पडिबो ना डीसी जनरेटर सर मो 15टा इंपोर्टेंट पार्ट को डिस्कशन करेबी ए 15टा पार्ट ऊपर तमे लाइफ रे जे कोनसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दबो जेमिति ओपीटीसीएल दियो ओएसपीसी दियो ओएमसी दियो एसएससी दियो आरआरबी दियो ओएलआईसी दियो ओडब्ल्यूएससी दियो ओजेई दियो जे कोनसी स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट रो एग्जामिनेशन दबो
आउ एतिकी टॉपिक रु मुझे 15टा टॉपिक को तुमको तीनटा क्लास रे डिस्कशंस करैबी ए तीनटा क्लास रे गोटे कि दीटा क्वेश्चन निहाती तुम जे कोनसी लाइफ रे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दबो तुम मान पर आसी सेशनटा बहुत हेल्पफुल हो तुम मान को ध्यान से बुझिया को चेष्टा प्रथम डिस्कशन करूची कोन ना योग प्रथम डिस्कशन करियो पिले कोन ना योग The yoke of a DC machine is outer casing of a DC machine that houses of a starter and a rotor. कौन कहिए योक टा गोटे को पार्ट डीसी मशीन न सर गोटे आउटर पार्ट देखु छ एटा होची कहारो डायग्राम ना पिले सर एटा योक रो डायग्राम एटा होची कोन ना डीसी मशीन न आउटर बा ताको घर कुआ जाउची स्टार्टर आ रोटर पार्ट रो घर की ना सर योक द योक play a crucial role in the operation and performance of a DC machine. Crucial माने कौन सर important role गोटे DC machine पाई सबुठु important और जबरदस्त रोल किए प्ले करूची ना योक प्ले करूची and its design and construction are critical to the machine efficiency reliability and durability कौन कहला यार डिजाइन कंस्ट्रक्शन टा एटी पाई सर योक रो क्रिटिकल से डिपेंड करूची मशीन से अनुसार एफिशिएंसी केते हो मशीन नो रिलायबिलिटी केते हो और मशीन नो ड्यूरेबिलिटी केते हो कौन कहिला सर योक विषय रो देखला माने मु एया मो माइंड को फील आसुची सर योक ता होची गोटे डीसी मशीन नो आउटर पार्ट टा एटा होची स्टार्टर आ रोटर रो घर बोली कह जाउची गोटे डीसी मशीन पाई गोटे क्रूशियल इंपोर्टेंट पार्ट होची सर ना कोन योक ये योग रो कंस्ट्रक्शन टा एते क्रिटिकल करा जाउची कोन पय द मजबूत करा पड़ुची कोन पय ना मशीन नो एफिशिएंसी वाला रहिया पय मशीन वाला रिलायबिलिटी चलिया पय आ मशीन वाला ड्यूरेबिलिटी चलिया पय जनरली योग ऊपर हमर कोन रखा जाउची ना टर्मिनल बॉक्स प्रेजेंट रहउची योग ऊपर लिफ्ट आई प्रेजेंट रहउची योग रो एटा फ्रेम कहउचंती आ एटा जो फिटिंग करा जाउची हमर कोन एटा को योग फिट बोली तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन डिस्कशन करिबा कोन सर फंक्शन ऑफ योग फंक्शन ऑफ योग ए फंक्शन ऑफ योग को जीवा पूर्व प्रथम जानि देबा कोन फर्स्ट ना योग मशीन जो योगटा एटा जो योगटा तमे देखिलो ए योगटा को मशीन ने तयारी सर जदी आपण स्मॉल मशीन पय योगटा बनौछंती कास्ट आयरन ने तयारी जदी लार्ज मशीन पय योगटा बनौछंती सेटा कास्ट स्टील ने तयारी ए दीटा डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस ऑलरेडी आसी जायछि स्मॉल मशीन पाई कोथरे तयारी योगटा सर कास्ट आयरन पाई और लार्ज मशीन पाई योगटा कोथरे तयारी ना कास्ट स्टील योग रो जनरली चारिटा इंपोर्टेंट बा मेजर काम रहउची योग प्रथम काम कोन इट प्रोवाइड पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेटेड बाय द फील्ड वाइंडिंग टू द फ्लो थ्रू द मशीन कोन करिवो सर ये गोटे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेटेड पाई गोटे पाथ प्रोवाइडेड करिवो जे पचारिवो योग रो प्रथम काम कोन सर योग रो प्रथम काम होची गोटे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेटेड बाय गोटे पाथ प्रोवाइडेड करिवो सेकंड काम कोन द योग प्रोवाइडेड मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टार्टर एंड रोटर स्टार्टर और रोटर को गोटे को सपोर्ट प्रोवाइडेड करिवो सर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइडेड तीन नंबर पॉइंट द योग कैन हेल्प डिसिपेटेड हीट जनरेटेड बाय द मशीन ऑपरेशन सर जेते बेले गोटे मशीन ता ऑपरेशन होबो ना सेते बेले हीट जनरेटेड होबो ए हीट जनरेटेड को से मिनिमाइज मध्यम कर देबो योग द्वारा चार नंबर पॉइंट द योग एनक्लोज द मशीन इंटरनल कंपोनेंट protecting them from external environment factor and preventing from the accidental contact कोन कहिला सर किछि प्रोटेक्शन दबो जंती एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तमरो डैमेज न हो सेति पय प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड करिवो मध्य योग कोन जानिला सर योग रो चारिटा जनरली काम प्रथम काम कोन होची मैग्नेटिक फ्लक्स पय पाथ प्रोवाइडेड करिवो सेकंड काम स्टार्टर और रोटर को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करिवो थर्ड काम जेतबे मशीन ऑपरेशन ऑफ हीट हो ताको डिसिपेट कर चारि नंबर काम कोन जेतक इंटरनल पार्ट कंपोनेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड करिवो एनवायरमेंटल कंडीशन एबे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यो क्रोम आनिछि समस्त मते चार सेक्शन ने आंसर दबो केही भी साइलेंट रहिबनी समस्त निज निज रिस्पांस शेयर करिवो क्वेश्चन नंबर 1 वेरी फास्टली आंसर दबो बहुत गुडे क्वेश्चंस डिस्कशंस करिवार अछि which of the following is outer casing of the DC machine sir DC machine no outer part or na kon excellent समस्तंगर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन नंबर सी
सर ए डीसी मशीन नो आउटर पार्ट ना होची योक। क्वेश्चन नंबर 2, द योक ऑफ ए डीसी मशीन मेनली हाउसेस, कहार घर कुआ जाउची, गोटे डीसी मशीन नो योक टाको कहार घर बोली कुआ जाउची। एक्सीलेंट, समस्त करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर सी, सर स्टार्टर एंड रोटर घर को कौन कुआ जाउची ना योक बोली कुआ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ योक, सर योक रो काम कोन। एक्सीलेंट, समस्त करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइड ए पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टर पार्ट ऑफ ए डीसी मशीन, एमानक मध्यरु कोटा स्टार्टर पार्ट रे जाउची, एमानक मध्यरु कोटा स्टार्टर पार्ट रे जाउची। एक्सीलेंट, समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टार्टर पार्ट रे फील्ड वाइंडिंग जनरली प्रेजेंट रहउची। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रोटर पार्ट ऑफ ए डीसी मशीन, एमानक मध्यरु रोटर पार्ट ता कोटा जाउची, रोटर पार्ट। एक्सीलेंट, समस्त करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर वाइंडिंग, को पार्ट ता सर आर्मेचर वाइंडिंग ता रोटर पार्ट रे जाउची। क्वेश्चन नंबर 6, द योक आल्सो प्रोवाइडेड मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द, जो योक रो काम कोन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइडेड करूची, काहा को योक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइडेड करूची। एक्सीलेंट, समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टार्टर एंड रोटर को योक कोन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइडेड करूची। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच मटेरियल इज जनरली यूज्ड फॉर योक स्मॉल डीसी मशीन, स्मॉल डीसी मशीन पई योक ता जनरली को मटेरियल ले तैयारी। एक्सीलेंट, समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कास्ट आयरन में तैयारी। क्वेश्चन नंबर 8, द योक फॉर ए लार्ज डीसी मशीन इन जनरली मेड ऑफ, लार्ज डीसी मशीन नो योक ता कोथर तैयारी। एक्सीलेंट, समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कास्ट स्टील ले तैयारी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए स्टार्टर पार्ट ऑफ ए डीसी मशीन, एमानक मध्यरु कोटा स्टार्टर पार्ट नुह। एक्सीलेंट, समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सर कम्यूटेटर टा स्टार्टर पार्ट नुह। क्वेश्चन नंबर 10, द योक हेल्प टू प्रोटेक्ट इंटरनल कंपोनेंट ऑफ ए डीसी मशीन फ्रॉम, द योक हेल्प टू प्रोटेक्ट इंटरनल कंपोनेंट ऑफ डीसी। एक्सीलेंट, समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर एंड एक्सीडेंटल कांटेक्ट को प्रोटेक्शन करिया पई हमरो डीसी मशीन ने यो प्रोवाइड करा जाय। ए जो डीसी मशीन नो प्रथम पार्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो स्टार्टर और रोटर भीतर योक, ए जो 10टा क्वेश्चन डिस्कशन कली, कहार केतटा क्वेश्चन ठीक गेला, ठीक है समस्त चैट सेक्शन में मैसेज करो सर मोर एतिकटा क्वेश्चन ठीक है। एक्सीलेंट, 10 रु 10 9। क्वेश्चन ना लेवल केमिति अछि, इजी ना मॉडरेट ना टफ, क्वेश्चन ना लेवल केमिति अछि। वेरी गुड सर, इजी टू मॉडरेट अछि, वेरी गुड। आंसर तम मन को पीडीएफ पछपटे क्वेश्चन सरिला पर तम मन को आंसर प्रोवाइडेड करा जायछि, कोनसी प्रकार प्रॉब्लम होनी तमे देखि पारि। तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म डिस्कशन करिवा कोन ना सिंबल यूज इन द सर्किट डीसी मशीन। सर डीसी मशीन ने आमे जनरली चारटा जिंस देखुछु, गोटे कोन ना आर्मेचर, आ गोटे कोन ना फील्ड, को फील्ड ना शंट फील्ड, आ गोटे कोन ना सीरीज फील्ड, आ गोटे कोन ना मैग्नेटिक फील्ड, आ गोटे लोड। चारटा जिंस देखुछु जे पचारिबो गोटे डीसी मशीन रे
गोटे डीसी मशीन ने आर्मेचर टर्मिनल ना कौन सर A1 A2। गोटे डीसी मशीन ने मैग्नेटिक फील्ड टर्मिनल कौन ना F1 F2। गोटे डीसी मशीन ने सीरीज फील्ड टर्मिनल कौन ना Y1 Y2। गोटे डीसी मशीन ने शंट फील्ड टर्मिनल कौन ना Z1 Z2। गोटे डीसी मशीन ने लोड टर्मिनल कौन ना L एंड D। ए पांचटा जाक निहाती भाबरे गोटिए क्वेश्चंस आजिकली डायरेक्ट पचारुछि। मैं देखिछि इसरो रो लेटेस्ट क्वेश्चन रे पचारितला शंट फील्ड टर्मिनल ना कोन सर Z1 सीरीज फील्ड टर्मिनल ना कोन Y1 Y2। लोड टर्मिनल ना कोन L और D। आर्मेचर टर्मिनल कोन A1 A2। ए भला भाबरे तमे सबुतक टर्मिनल सिंबल्स कमन जेते बड़ा प्रैक्टिकल तमर पड़ी जो स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज कोन स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर से तमे फील्ड टर्मिनल को आइडेंटिफिकेशन करबाटा कि डिफिकल्ट तमान पे पड़ी जो तेनु करी तमे टर्मिनल ता जानिबाटा निहाती निहाती जरूरी दे दो। एबे नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करिया पिले कोन ना क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन बाय कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। माने सर मोर कंस्ट्रक्शन को देखि की मो डीसी मशीन को गोटे कंस्ट्रक्शन को देखि की मो डीसी मशीन को दी भागरे विभक्त करूची ऑन द बेसिस ऑफ साइज देखि की आउ ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड देखि की ता माने डीसी मशीन न कोन सर दीटा जिंस को देखि की मो जनरली क्लासिफिकेशंस करूची कंस्ट्रक्शन दृष्टि गोटे होची ऑन द बेसिस ऑफ साइज आउ ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। जदि डीसी मशीन नो साइज दृष्टि केते भागरे क्लासिफिकेशन करा जायछि ना तीन भागरे गोटे होछि स्मॉल मशीन गोटे होछि मीडियम मशीन आ गोटे होछि लार्ज मशीन। स्मॉल मशीन कहले कोन बुझिबो सर जो मशीन नो रेटिंग अप टू 0.6 किलोवाट ताको स्मॉल मशीन। सर जो मशीन नो रेटिंग 0.6 टू 250 किलोवाट ताको मीडियम टाइप मशीन। जो मशीन नो रेटिंग लार्ज 250 किलोवाट एबव अछि ताको हम कहिबा कोन ना लार्ज टाइप डीसी मशीन। से बड़ा भाबरे स्पीड दृष्टि देखिले केते भाग विभक्त करा जायछि तीन भागरे ना लो स्पीड डीसी मशीन्स अछि मीडियम स्पीड डीसी मशीन्स अछि और लार्ज स्पीड डीसी मशीन। ए लो स्पीड डीसी मशीन का कहबा सर जो मशीन स्पीड 250 रु 400 आरपीएम ताको लो स्पीड मशीन कहबा। जो मशीन रेटिंग स्पीड 400 रु 1500 आरपीएम ताको मीडियम स्पीड मशीन कहबा। जो मशीन रेसिंग एबव 1500 आरपीएम ताको कहबा लार्ज स्पीड मशीन। ए भाबरे कोन ना क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन बेस्ड अपॉन कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। जो माने ए स्लाइड ता क्लियर हेलो क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन बाय कंस्ट्रक्शनल फीचर की समस्त चार सेक्शन ने इस लगी दिया सर क्लियर हो समस्त रेस्पॉन्स निहाती दरकार जो माने भी लाइव अछो समस्त चार सेक्शन ने मैसेज कर वेरी गुड। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पार्ट को डिस्कशन करिगा पिले जहार ना कोन ना पोल कोर। जहार ना कोन पिले ना पोल कोर ना इट इज ए पार्ट ऑफ स्टार्टर। ये को पोल कोर का को पार्ट रे जाउची ना सर स्टार्टर पार्ट and serve at the magnetic path for the flux generated by the field winding। कौन कहला सर फील्ड वाइंडिंग रो जो फ्लक्स जनरेटेड हो ता पे पाथ के प्रोवाइडेड करूची ना पोल कोर। कौन कहला जे पचारिबो पोल कोर कहिले कोन बुझिबो तमे एतिकी कहि दो सर एटा गोटे स्टार्टर पार्ट रे जाउची। ये पोल कोर काम कोन सर फील्ड वाइंडिंग रो सर फील्ड वाइंडिंग जो फ्लक्स जनरेटेड होची ना ता पे गोटे मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइडेड होची। फील्ड वाइंडिंग रो जो फ्लक्स जनरेटेड होची ता पे गोटे कोन ना मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइडेड होची। तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कोन सर पर्पस ऑफ पोल कोर। सर पोल कोर काम कोन इट सपोर्ट द फील्ड और एक्जिस्टिंग कॉइल। जे पचारिबो कोन पोल कोर काम कोन सर पोल कोर काम होची सपोर्ट प्रोवाइडेड करिवो फील्ड वाइंडिंग बा एक्जिस्टिंग कॉइल। सेकंड पॉइंट कोन इट स्प्रेड आउट द मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर द आर्मेचर पेरिफेरी मोर यूनिफॉर्म। ये कौन करिवो ना ये स्प्रेड करिवो बिछेइबो कोन ना मैग्नेटिक फ्लक्स ऊपर आर्मेचर पेरिफेरी आर्मेचर ऊपर कोन ना मैग्नेटिक फ्लक्स को
थर्ड पॉइंट कौन इंक्रीज द क्रॉस सेक्शनल एरिया मैग्नेटिक सर्किट एज द रिजल्ट रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ इज रिड्यूस तापर कौन करिवो सर इंक्रीज करिवो क्रॉस सेक्शनल एरिया मैग्नेटिक सर्किट रो कौन करिवो ना क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करिवो और रिलक्टेंस पाथ करिवो ये होची कौन ना पर्पस ऑफ पोल तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन डिस्कशन करिवा ना सर पोल शू नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म ना पोल शू ए पोल शू इज ए component a pole shoe is a component of a DC machine which is used for the extension of the pole core that spread out increase the magnetic flux area पोल शू रो काम कोन सर पोल शू रो काम होउछ ए कोन करिवो ना एक्सटेंशन करिवो पोल कोर स्प्रेड आउट द इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन फंक्शन ऑफ पोल्स ए फंक्शन ऑफ पोल्स रो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे ऑलरेडी तमानकर क्वेश्चंस आसी सारिछ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे ए फंक्शन ऑफ पोल्स रो आसी अछि प्रथम काम कोन पोल्स रो इट सपोर्ट द फील्ड वाइंडिंग ए कोन करिवो सर फील्ड वाइंडिंग को गोटे सपोर्ट प्रोवाइड करे सेकंड काम कोन स्प्रेड द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द एयर गैप रे मैग्नेटिक फ्लक्स को स्प्रेड करे थर्ड काम कोन इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया फंक्शन ऑफ पोल्स रो काम कोन ना फ्लक्स एरिया को इंक्रीज करे चार नंबर काम कोन रिड्यूस द मैग्नेटिक पाथ और रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ को रिड्यूस करे पांच नंबर काम कोन इंप्रूव द फ्लक्स डिस्टोरेशन इंक्रीज करिवो 6 नंबर काम कोन रिड्यूस द फ्लक्स लिंकेज को मध्ये रिड्यूस करिवो जे पचारिबो पोल सोर जो 6 टा फंक्शन कोन कोन तमे कहिला तमे एति की कहि पारिबो सर ये सपोर्ट करूची फील्ड वाइंडिंग को आ मैग्नेटिक फ्लक्स को स्प्रेड करूची एयर गैप रे मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया को इंक्रीज करूची मैग्नेटिक पाथ रो रिलक्टेंस पाथ को रिड्यूस करूची फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन को इंप्रूव करूची आ लीकेज फ्लक्स को रिड्यूस करूची ये होची 6 टा काम कहार ना पोल शू तापर आसीला फंक्शन ऑफ पोल्स सर आउ तीनटा इंपोर्टेंट कोन जोटा कि तमन बारंबार कॉम्पिटिटिव एग्जाम रो स्टार मार्क दे पोल शू आर टिपिकली मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल आर डिजाइन जेते बेले तमरो पोल शू को टिपिकली हमें डिजाइन करू जेते बेले पोल शू को हमें टिपिकली डिजाइन करू हमें कोन गोटे मैग्नेटिक मटेरियल कोन देखि कि ना मैक्सिमाइज केमिति हो फ्लक्स डेंसिटी मिनिमाइज केमिति हो एनर्जी लॉस ऑप्टिमाइजेशन मशीन परफॉर्मेंस कम करिला जेते बेले पोल कोर भीतर हमें पोल शू को फिट करू ना सेते बेले ए तीनटा जिंस प्रति हमें डिजाइन कला बेले ध्यान दउ प्रथमे कोन सर मैक्सिमाइज करू फ्लक्स डेंसिटी मिनिमाइज करू एनर्जी लॉस को ऑप्टिमाइज करू मशीन परफॉर्मेंस तापर आसीला बाय यूजिंग पोल शू इन ए डीसी मशीन कैन अचीव सर गोटे डीसी मशीन ने हमें जदी पोल शू को व्यवहार करू सर गोटे डीसी मशीन ने हमें जदी पोल शू को व्यवहार करू कोन हबो ना प्रथम काम होची इंप्रूव टॉर्क हबो आ इंप्रूव एफिशिएंसी हबो द्वितीय काम कोन रिड्यूस करिवो एनर्जी लॉस तृतीय काम कोन एनहांस द ओवरऑल परफॉर्मेंस तेते बेले कोटे डीसी मशीन ने सर पोल शू को हमें व्यवहार करूछु प्रथम काम इंप्रूव हबो टॉर्क सेकंड काम इंप्रूव हबो एफिशिएंसी थर्ड काम रिड्यूस हबो एनर्जी लॉस चार नंबर काम एनहांसमेंट हबो ओवरऑल परफॉर्मेंस नोट पॉइंट कोन ना द पोल कोर एंड द पोल शू आर फिक्स्ड विथ द कोन बाय द बोल्ट सहायता रे काउंटर स्क्रू सहायता रे जनरली दा फिट करा एबे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करिबा जोटा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड तमरो डिफरेंट टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखिबा काहे कतना क्वेश्चंस तमन बहुत ठीक होछि क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच टर्मिनल रिप्रेजेंट आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन एमान को मध्यरु को टर्मिनल ता आर्मेचर पय रिप्रेजेंटेशन करा केही भी साइलेंट रहिबनी समस्त निज निजर एक्सीलेंट सर समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी A1 and A2 क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच टर्मिनल आर यूज्ड द मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग पय को टर्मिनल आवश्यक हो
एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी F1 F2 क्वेश्चन नंबर 3 the series magnetic field terminal are represented by series magnetic field excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी Y1 Y2 series field winding question number 4 which terminal represented shunt magnetic field excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी Z1 Z2 question number 5 the primary purpose of pole core in a DC machine ने pole core रो primary purpose कौन excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी provide the magnetic path for the field flux ପାଇଁ magnetic path provided करियो question number 6 which of the following function of pole core रो काम कौन excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सपोर्ट द फील्ड कॉइल पोल कोर रो काम होची सपोर्ट प्रोवाइडेड करिवो फील्ड कॉइल क्वेश्चन नंबर 7 which of the what is the main function of pole shoe रो मेन फंक्शन कौन excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी spread the magnetic flux in the air gap रे magnetic flux को स्प्रेड करिया पई हमर कोन पोल शू क्वेश्चन नंबर 8 which of the following not a function of pole shoe एमान को मध्यरु कोटा पोल शू रो फंक्शन नो excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी increase armature resistance question number 9 the pole core and pole shoe are fixed by using pole core and pole shoe are fixed by the using excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बोल्ट द्वारा तक व्यवहार करा जाउछ क्वेश्चन नंबर 10 according to the classification based on the speed DC machine with the 1500 rpm को DC machine 1500 rpm और ऊपर को बोले सेटा को टाइप रो DC machine कैटेगरी काउंट करा जाउछ 1500 rpm ऊपर जदि DC machine ता बोलुची को टाइप रो excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हाई स्पीड DC machine ये जो आर्मेचर टर्मिनल पोल कोर पोल शूर जो 10टा क्वेश्चन डिस्कशन करैली कहार कतटा क्वेश्चन ठीक हैला ठीक समस्त चार्ट सेक्शन मते मेसेज कर सर मोर एतिकटा क्वेश्चंस ठीक है 10 रु 10 एक्सीलेंट समस्त मजा हो कंटेंट भलो अछि त कंटेंट भलो अछि ना नहीं ने बहुत परिश्रम करिकी तम ପାଇଁ कंटेंट बनेकी क्लास करकी हाँ वेरी गुड देखो तापर देखो फील्ड वाइंडिंग नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म डिस्कशन करिबा कोन ना फील्ड वाइंडिंग द फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए डीसी मोटर कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर एथरो कोन सिखिला सर गोटे डीसी मोटर रे जो फील्ड वाइंडिंग ना सेटा को तार रे तयारी ना कॉपर तार रे तयारी wound around the pole core field winding ता कोठी लागुची सर पोल कोर जनरली पोल कोर रे को वाइंडिंग प्रेजेंट रहउची सर फील्ड वाइंडिंग कोथर तयारी होची ना कॉपर तार को वाइंडिंग रे अधिक हीट प्रोड्यूस होबो सर फील्ड वाइंडिंग को वाइंडिंग अधिक हीट प्रोड्यूस होबो फील्ड
some important point related to field winding ये जो important point है ना ये गुरा परीक्षा रे तमन पडुची important point प्रथम point कौन कहिला सर field winding is an electromagnet that generate a magnetic field पचारला प्रथम point रो important point कौन field winding रो काम कौन सर ये जनरेट करूची मैग्नेटिक फील्ड आ फील्ड मैग्नेट फील्ड वाइंडिंग ता गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट सेकंड पॉइंट इट इज ए कॉइल दैट कैरी डीसी करंट जे पचारिबो फील्ड वाइंडिंग ता को करंट को कैरी करूची सर फील्ड वाइंडिंग ता डीसी करंट को कैरी थर्ड पॉइंट इट प्रोड्यूस ए स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड फील्ड वाइंडिंग ता को टाइप रो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करूची सर फील्ड वाइंडिंग ता स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट फोर पॉइंट कौन फील्ड वाइंडिंग प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डिस्ट्रीब्यूट द फ्लक्स आर्मेचर वाया पोल्स कौन कहिला ए फील्ड वाइंडिंग मध्य कौन ना स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड करूची आ डिस्ट्रीब्यूट मध्य करूची पोल्स को दे जे पचारिबो सर फील्ड वाइंडिंग रो काम कौन तमे एतिकी कहि परिबो सर जेते बेले मो माइंड को फील्ड वाइंडिंग पर आसुची ना मो प्रथमे भाबुची फील्ड वाइंडिंग ता कोठी लागुची ना पोल कोर पाखरे कोथरे तयारी ना कॉपर वायर तयारी जदी गोटे डीसी मशीन नो हाईएस्ट हीट होची कोठी ना फील्ड वाइंडिंग ए फील्ड वाइंडिंग ता इलेक्ट्रोमैग्नेट ए फील्ड वाइंडिंग ता जनरेट करूची मैग्नेटिक फील्ड फील्ड वाइंडिंग को डीसी करंट कैरी करूची गोटे फील्ड वाइंडिंग स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करूची बोली जानो तापर आसीला फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए डीसी मशीन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन प्रथम काम कोन मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन करूची सेकंड काम कोन फ्लक्स क्रिएशन करूची थर्ड काम कोन टॉर्क को रेगुलेशंस करूची चार नंबर काम कोन स्पीड को रेगुलेशन करूची पांच नंबर काम कोन वोल्टेज को रेगुलेशन करूची और 6 नंबर काम कोन स्टेबलाइजेशन करूची जे पचारिबो गोटे डीसी मशीन नो फील्ड वाइंडिंग रो काम कोन मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन करूची फ्लक्स क्रिएशन करूची टॉर्क जनरेशंस करूची स्पीड को रेगुलेशन करूची वोल्टेज रेगुलेशन करूची और स्टेबलाइजेशन करूची तापर टाइप्स ऑफ फील्ड वाइंडिंग तापर आसीला कोन सर टाइप्स ऑफ फील्ड वाइंडिंग ए फील्ड वाइंडिंग तीन प्रकार फील्ड वाइंडिंग जनरली तीन प्रकार हमर गोटे सीरीज फील्ड वाइंडिंग गोटे होची शंट फील्ड वाइंडिंग आ गोटे होची कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग सर जनरली तीन प्रकार गोटे होची सर सीरीज फील्ड वाइंडिंग आ गोटे होची शंट फील्ड वाइंडिंग आ गोटे होची कोन ना कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग प्रथम वाइंडिंग डिस्कशन करिबा जहार ना पिले कोन ना सीरीज फील्ड वाइंडिंग ए सीरीज फील्ड वाइंडिंग रो प्रथम टर्म कोन ना सीरीज फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए डीसी मशीन टाइप ऑफ फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन वेयर फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड सीरीज विथ आर्मेचर ए जो पचारिला सर गोटे डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग को केमिति कनेक्टेड करा जाय सर गोटे डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग को सीरीज कनेक्टेड करा जाय कहा संगरे ना विथ आर्मेचर वाइंडिंग संगरे सीरीज कनेक्टेड करा सेकंड पॉइंट इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस पचारिबो गोटे सीरीज फील्ड वाइंडिंग रे रेजिस्टेंस रो वैल्यू लो सेति पय कोन करे ना गोटे सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर रे हेवी करंट को से ड्रॉ करे इट इज एक्साइटेड बाय आर्मेचर करंट पचारिबो फील्ड सीरीज फील्ड वाइंडिंग को करंट द्वारा एक्साइटेड हेता है ना आर्मेचर करंट द्वारा तापर इट हैज वेरी लेस नंबर ऑफ कोन टर्न आउ थिक एयर सीरीज फील्ड वाइंडिंग रो प्रॉपर्टी कोन सर मोटा तार और कम गुणित फॉर द फ्लक्स इंक्रीज लोड इंक्रीज जते बेले फ्लक्स बढ़िबो तबे लोड कम जे पचारिबो पिले सीरीज फील्ड वाइंडिंग विषय तमे जानिछो कोन कहिलो तमे एतिके जिंस कहि परिबो सर सीरीज फील्ड वाइंडिंग दा तयारी कोठी ना थिक वेयर मोटा तार और लेस नंबर ऑफ टर्न ए मोटा तार थबारु तार क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ुची जहा फल आर्मेचर करंट रो वैल्यू कैरी करूची इंक्रीज करूची और रेजिस्टेंस रो वैल्यू लो रहउची और फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग सहित सीरीज रे लागुची तापर आसीला सेकंड इंपोर्टेंट वाइंडिंग जहार ना कोन पिले ना शंट फील्ड वाइंडिंग ए शंट फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए डीसी मशीन इज अ टाइप ऑफ फील्ड वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए डीसी मशीन एटा गोटे टाइप ऑफ फील्ड वाइंडिंग connection where field winding is connected in parallel with the armature winding parallel सहित armature सहित आउ it has very high resistance shunt field winding रो resistance रो value बहुत high generally 200 ରୁ 300 ohm भितर रहे it carries small amount current 1 ରୁ 5 ampere भितर current carry करे गोटे shunt field winding केते current carry करे बहुत small amount
It has more torque in thin wire. Shunt field winding ର property କଣ କେମିତି ତିଆରି sir thin wire ପତଳା ତାର and more number of turn ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଳିଆ ହେଇଥିବ produces steady and nearly constant flux ଗୋଟେ shunt field winding ସବୁବେଳେ constant flux nearly produce କରିବ field current almost constant ଗୋଟେ DC machine ର shunt field winding ର current ର value ସବୁବେଳେ constant ଥାଏ कौन कहला सर डीसी मशीन नो शंट फील्ड वाइंडिंग विषय में जाने को चाहूँ सर मो शंट फील्ड वाइंडिंग कहले एते की जानि छी से केमिति मेडिन तयारी केमिति सर थिन वायर मोर नंबर ऑफ टर्न आउ शंट फील्ड वाइंडिंग इज स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो आउ शंट फील्ड वाइंडिंग रो रेजिस्टेंस रो वैल्यू है ई शंट फील्ड वाइंडिंग ता कांस्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस करे ई शंट फील्ड वाइंडिंग ता कोन पैरेलल लागे कोन आर्मेचर वाइंडिंग्स तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट वाइंडिंग डिस्कशन करिबा जहार ना कोन कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग जहार ना कोन पिले ना कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग एक कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज फील्ड वाइंडिंग एंड शंट फील्ड वाइंडिंग इन ए डीसी मशीन गोटे डीसी मशीन ने सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग रो कॉम्बिनेशन टाको हमें जनरली कोन कहउछे ना कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग बोली कहउछे Second point, it provided combined advantages both shunt and series field winding. ये कौन करे ना shunt और series पाई combined advantages. Provide better voltage regulation in generator पाई. Provide high starting torque with better speed control in DC motor पाई. सर जदि आपण एप्लीकेशन कथा देखंती गोटे डीसी जनरेटर रे कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग रो इंपोर्टेंस होची भलो वोल्टेज रेगुलेशन पाई जदि आपण एप्लीकेशन रे डीसी मोटर कथा देखिबे हाई स्टार्टिंग टॉर्क की बेटर स्पीड कंट्रोल करिया पई जनरली हमें कंपाउंड वाइंडिंग को प्रेफर करताउ सर एक कंपाउंड वाइंडिंग होची दुई प्रकार गोटे क्युमुलेटिव कंपाउंड वाइंडिंग आ गोटे होची डिफरेंशियल कंपाउंड वाइंडिंग एक क्युमुलेटिव कंपाउंड वाइंडिंग रे सीरीज फील्ड ऐड विथ शंट फील्ड सीरीज फील्ड फ्लक्स शंट फील्ड फ्लक्स सहित ऐड हुए फ्लक्स इंक्रीज हुए लोड सहित मोस्ट कॉमनली यूज होची क्युमुलेटिव कंपाउंड तापर आसिला डिफरेंशियल कंपाउंड वाइंडिंग एक डिफरेंशियल कंपाउंड वाइंडिंग रे सीरीज फील्ड अपोज करिवो शंट फील्ड को देन करी टोटल फ्लक्स ऑफ डिक्रीज विथ लोड और रेयरली यूज पचारिबो एमिति को टाइप रो कंपाउंड वाइंडिंग रेयरली यूज करा जाउची डिफरेंशियल कंपाउंड को टाइप रो कंपाउंड वाइंडिंग मोस्टली यूज करा जाउची क्युमुलेटिव कंपाउंड एक क्युमुलेटिव कंपाउंड रे लोड बढ़िले फ्लक्स इंक्रीज हुई किंतु डिफरेंशियल कंपाउंड लोड कोन फ्लक्स डिक्रीज हुई एबे डेरी न करके किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करिया जोडा कमान को पाए माने छी क्वेश्चन नंबर 1 समझते जबरदस्त क्वेश्चन जबरदस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 1 द फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए डीसी मशीन जनरली मेड सर गोटे डीसी मशीन नो फील्ड वाइंडिंग का कोथिर तयारी एक्सीलेंट ऑलरेडी समस्तंगर आंसर आसी गलानी ऑप्शन नंबर सी सर कॉपर वायर डीसी मशीन नो फील्ड वाइंडिंग का कोथर तयारी सर कॉपर तयारी क्वेश्चन नंबर 2 द फील्ड वाइंडिंग इज ओन्ड अराउंड द फील्ड वाइंडिंग का कोथर गुलिया जाए एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर डी फील्ड वाइंडिंग का पोल कोर रे गुलिया जाए फील्ड वाइंडिंग ता कोथर गोलिया जाए ना पोल को क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फील्ड वाइंडिंग इन ए डीसी मशीन ने फील्ड वाइंडिंग रो प्राइमरी काम कोन मेन काम कोन एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर सी सर जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड कोन करिवो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करिवो Question number 4. In series field winding connected. Series field winding कहा संगरे connected होउछ series. Excellent. समस्तंगर correct answer आसुची option number C. In series with armature winding. Field winding कहा संगरे series with armature winding. Question number 5. Which of the following characteristic of series field winding? एमानक मध्यरु सीरीज फील्ड वाइंडिंग रो कोटा कैरेक्टरिस्टिक एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सर सीरीज फील्ड वाइंडिंग रो वेरी लो रेजिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 6
In shunt field winding, the field winding is connected. Shunt field winding रे field winding को केमिति connected करा? Excellent. समस्तंगर correct answer option number B, in parallel with armature winding. Question number 7. Which of the following characteristic of shunt field winding? एमानक मध्यरु shunt field winding ର कोटा characteristic? Excellent. समस्तंगर correct answer option number C, produce a nearly constant magnetic flux. Constant magnetic flux produce. Question number 8. A compound field winding is combination of. Compound field winding कहर कहर को winding रो combination को मैं compound winding generally कहूँ. Excellent. समस्तंगर correct answer option number C, series and shunt field winding. Series and shunt field winding रो combination को. Question number 9. Which type of compound winding is mostly commonly used? DC machine ने एमानक मध्यरु को compound winding commonly use करा जाए. Excellent. समस्तंगर correct answer option number D, cumulative compound winding. Question number 10. Which of the following not a function of field winding? एमानक मध्यरु कोटा गोटे field winding रो function नुह. Excellent. समस्तंगर correct answer option number D, mechanical braking. कौन कौन फील्ड वाइंडिंग रा फंक्शन? सर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेशन करियो, स्पीड को रेगुलेशन करियो, वोल्टेज करियो. ए जो वाइंडिंग रो टाइप्स ऑफ वाइंडिंग रो जो 10टा क्वेश्चन डिस्कशन कली, कहार केतटा क्वेश्चन ठीक हैला? ठीक है, समस्त चैट सेक्शन में मैसेज करियो सर मोर एतिकटा क्वेश्चन. वेरी गुड. जो माने भी लास्ट पर्यंत क्लास को देखिछो समान को बहुत बहुत धन्यवाद. निहाती भाबरे आजिरो क्लास रे तमन को किछि सिखिबा को मिलथियो. ए भलिया तीनटा क्लास हबो. कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन पाखा पाखी 1.5 घंटा क्लासेस समस्त जॉइन करिवो एवं भलो भाबरे नोट्स को रखि 100% रिजल्ट तमन रहउची. जय जगन्नाथ समस्त. वेरी गुड. आमे जो 60 सीरीज स्टार्ट करिथिले ए 60 सीरीज रो क्लास नंबर आज केते ना 10 को डिस्कशन करिबा. जो माने भी क्लास 9 पर्यंत देखिन रिकॉर्डेड सेक्शन ने वीडियो अछि सीरियली समस्त क्लास 9 पर्यंत देखिन. आज रो टॉपिक तमन कोन पाई कोन थिला ना कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन रो. कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन रो क्लास नंबर 2 आउट टोटली ऊपर तुमको क्लास नंबर 10 चलिलानी. अब एक कंस्ट्रक्शन डीसी मशीन रो सब्जेक्ट वाइज रो 2 नंबर एटा क्लास. आज रो टॉपिक रे मु तुमको कोन कोन डिस्कशन करेबी. आज रो ए कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन ने क्लास नंबर 2 रे मु तुमको एतिकी जिंस ही कवर करेबी. प्रथमे कोन डिस्कशन करिबा ब्रशेस कोन, तापरे ब्रश होल्डर कोन, टाइप्स ऑफ ब्रश होल्डर कोन, फंक्शन ऑफ ब्रश होल्डर कोन, स्प्रिंग असेंबली कोन, टाइप्स ऑफ स्प्रिंग असेंबली कोन, आर्मेचर कोर कोन, फंक्शन ऑफ आर्मेचर कोर कोन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्मेचर कोर कोन, आर्मेचर वाइंडिंग कोन, टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग कोन, फंक्शन ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग कोन, आर्मेचर वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ केमिति आर्मेचर वाइंडिंग का थियरी होची. तापर सेसर डिस्कशन करिबा कोन एंड ऑफ द टॉपिक रे कोन ना कंपैरिजन बिटवीन कोन वेव वाइंडिंग एंड लैप वाइंडिंग. ये एतिकी टॉपिक जदी कंप्लीट करूछो तमे जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दबो जेमिति की ओपीटीसीएल दियो, ओएचपीसी दियो, ओएमसी दियो, एसएससी दियो, आरआरबी दियो, ओडब्ल्यूएससी दे दियो, ओजेई दियो, जे कोनोसी स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट रो एग्जामिनेशन 100% ए टॉपिक रो गोटे क्वेश्चन सी आसीबो ही आसी. आ से क्वेश्चन ता निहाती भाबरे इनक्लूडेड थिबो कोन मो कंटेंट रे. समस्त रेडी तो क्लास स्टार्ट करिया पई. जो माने भी रेडी अच्छो क्लास स्टार्ट करिया पई कि समस्त चैट सेक्शन ने यस लेखो त रेडी बोल.
रेडी तो रेस्पॉन्ड आसुनी ओके वेरी गुड वेरी गुड देखो डिस्कशन करी ब्रशेस कौन ना ब्रशेस होची इट इज मेड ऑफ कार्बन सर ब्रश टा कोथरे तयारी सर ब्रश टा कार्बन ने तयारी आ कोथरे ना कॉपर और एनी अदर ऑफ अदर मटेरियल दीज आर कंडक्टिव कंपोनेंट प्रेस अगेंस्ट द कम्यूटेटर जे पचारिला कोन कहिला सर ब्रश कहिले कोन बुझुछ तमे एतिकी जिंस कहबो सर जनरली ब्रश टा हमर मेड होची कोन ना कार्बन ने तयारी न हले कॉपर रे ब्रश हमर तयारी और अदर मटेरियल मध्य तयारी हे करिवो जोटा कि निहाती भाबरे कंडक्टिंग हेतिबा दरकार आ ये प्रेस करा जाउची एग्नेस्ट कम्यूटेटर विरुद्ध कोन ना लगिया जाउची इट इज ए रोटेटिंग पार्ट ऑफ ए डीसी मशीन टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल पावर जे पचारिबो ब्रश को गोटे को पार्ट कुआ जाउची सर ब्रश को जनरली हमें स्टेशनरी पार्ट बोली कुआ जाउची ब्रश को कोन कुआ जाउची सॉरी रोटेटिंग पार्ट बोली कुआ जाउची ये कोन करूची ना इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर करूची ब्रश टा निजे गोटे रोटेटिंग पार्ट आ एटा कोथरे ना स्टेशनरी पार्ट रे जाउची किंतु ब्रश टा निजे बुलुची ब्रश आर मेड ऑफ कार्बन ब्रश टा जनरली कोथरे तयारी सर ब्रश जनरली हमर कार्बन ने तयारी कार्बन ब्रशेस आर प्रोवाइडेड सेल्फ लुब्रिकेशन आल्सो कार्बन ब्रश कोन प्रोवाइडेड करूची ना कार्बन ब्रश एति पई हमें प्रेफर करूची से भलो लुब्रिकेशन दे पारे कॉपर ब्रशेस आर प्रेफर लो वोल्टेज एंड हाई करंट कौन कहिला सर ब्रश ऊपर क्वेश्चन आसिला ये कौन करूची सर ब्रश होची गोटे कौन ना स्टेशनरी पार्ट ब्रश होची गोटे स्टेशनरी पार्ट ये ब्रश रो कोथरे तयारी ना कार्बन नहले कॉपर रे तयारी जनरली हमें कार्बन ब्रश को प्रेफर करूची कौन पाई हमें कार्बन ब्रश को प्रेफर करूची सर कार्बन ब्रश रो सेल्फ लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी टा भलो जदि कॉपर ब्रश व्यवहार करे तार एडवांटेजेस कोन सर जो जगह रे लो वोल्टेज एंड हाई करंट एप्लीकेशंस अछि जो जगह रे लो वोल्टेज एंड हाई करंट एप्लीकेशंस अछि सेही जगह रे हमें कॉपर ब्रश को प्रेफर करता ब्रश रे जे पचारिबो जेन्युइन काम कोन ना ट्रांसफर करिवो इलेक्ट्रिकल पावर तापरे width of a carbon brush should be equal to width of the 2 to 3 times of commutator segment कौन कहिला सर गोटे कार्बन ब्रश जनरली जदी हमें प्रेफर करूचे ये कार्बन ब्रश जो प्रेफर करूचे कार्बन ब्रश रो width केते ना 2 to 3 times commutator segment for DC generator brush are used to receive the DC current from the commutator जे पचारिबो डीसी जनरेटर रे ब्रशेस रो काम कोन सर ये रिसीव करूची डीसी करंट कम्यूटेटर रो डीसी करंट को रिसीव करूची सेकंड पॉइंट डीसी मोटर ब्रशेस आर यूज्ड टू प्रोवाइड डीसी करंट टू द कम्यूटेटर फ्रॉम द डीसी सोर्स जे पचारिबो डीसी मोटर रे ब्रशेस रो काम कोन कोन पाई डीसी मोटर रे ब्रशेस को हमें व्यवहार करूछु सर ये प्रोवाइड करूची डीसी करंट टू कम्यूटेटर फ्रॉम द डीसी सप्लाई कम्यूटेटर को नहीं कि ये डीसी सप्लाई प्रोवाइडेड करूची आउ मेड इन एटा ब्रश टा को टाइप रो शेप रे देखु छ एटा ब्रश रो डायग्राम एटा सारा होची कोन ना रेक्टेंगुलर शेप ब्रश आर प्लेस को जगह जनरली ब्रश को हमरो रखा जाउची सर ब्रश को हमरो कोन एमएनए जगह रे रखा जाउची एमएनए कोन ना मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस proper brush pressure is important for the good commutation sir good commutation पाइबा पई good commutation पाइबा पई हमें जनरली कोन ना ब्रश रो प्रेशर को प्रॉपर रखिया को हबो टू हाई प्रेशर एक्सेसिव वेयर हबो टू लो प्रेशर स्पार्किंग हबो कोन जदी जदी तमे ब्रश रो प्रेशर को एपट सेपट कलो तीटा जिंस प्रोड्यूस आइदर तमे ब्रश रो प्रेशर को हाई रखि पारिबो नहले ब्रश रो प्रेशर को लो रखि पाइबो जदी तमरो ब्रश रो प्रेशर हाई हे जिवो एक्सेसिव वेयर लॉस हो आ जदी ब्रश रो प्रेशर लो हे जिवो स्पार्किंग प्रोड्यूस हो कौन सिखिलो तमे ब्रश ऊपर सर मो ब्रश ऊपर एया जिंस सिखिली जे मोर गोटे फंडामेंटल आईडिया पड़े आसिला सर ब्रश ऊपर ये ब्रश कहिले मो माइंड को कोन स्ट्राइक आसुची
सर ब्रश जनरली कोथरे तयारी ना कार्बन आउ कपर रे तयारी आ ब्रश टा होची गोटे स्टेशनरी पार्ट गोटे डीसी मशीन आ ब्रश सहायता रे हमें इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर करिथा आउ ब्रश टा जनरली हमरो कार्बन ब्रश रे तयारी जेहेतु कार्बन ब्रश रे तयारी तार सेल्फ लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी टा भलो सर जदि आपण ब्रश टा को कपर ब्रश रे तयार करूछंती कपर रे तयार करूछंती तबेले जो जगह रे आपण हाई करंट लो वोल्टेज एप्लीकेशन से जगह रे आपण कपर ब्रश को प्रिफर करि परिबे ए कार्बन ब्रश रो विड्थ जदि कंपैरिजन करिवे गोटे कम्यूटेटर को रखिकी 2 to 3 टाइम्स ऑफ कम्यूटेटर विड्थ सहित गोटे डीसी जनरेटर रे ब्रश रो काम कोन सर से रिसीव करिवो डीसी करंट फ्रॉम कम्यूटेटर ग्राफाइट मध्ये यूज करा जाउची ग्राफाइट मध्ये यूज करा जाउची किछ असुविधा नै पर डीसी मोटर रे ब्रश आर यूज करा जाउची कोन ना डायरेक्ट करंट टू द कम्यूटेटर फ्रॉम डीसी जनरली ब्रश रो शेप कोन अछि ना रेक्टेंगुलर शेप अछि आ ब्रश टा को प्लेस करा जाउची एमएन रे मध्ये आ ब्रश रो इंपोर्टेंट कोन ना ब्रश रो इंपोर्टेंट पॉइंट गोटे होची ना प्रॉपर ब्रश रो जदी प्रेशर ठीक रहइबो ना तम मानकर कम्यूटेशन भलो हो जदि ब्रश रो प्रेशर हाई हे जिवो एक्सेसिव वेयर लॉस हो जदि ब्रश रो प्रेशर लो हे जिवो तमरो स्पार्किंग प्रोड्यूस हो एति की होची इंपोर्टेंट एटा मेन स्लाइड दे देची तम मानको पई व्हाट इज कार्बन ब्रश फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रश कोन कोन मटेरियल यूज करा जाउची की फीचर्स कोन आउ इंपोर्टेंस कोन आउ वेयर इट इज यूज्ड आउ कोन हाउ इट इज वर्क केमिति भाबरे काम करू ए स्लाइड टा को निहाती भाबरे तम माने ध्यान रख तापर आसिला सेकंड इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करिबा कोन ना टाइप्स ऑफ ब्रश होल्डर ये ब्रश को धरि रखिया पई ए टाइप रो कोन ना गोटे ब्रश होल्डर हमें जनरली व्यवहार करू कोन ना स्प्रिंग और लोडेड ब्रश होल्डर ग्रेविटी फेड ब्रश होल्डर एडजस्टेबल ब्रश होल्डर जे पचारिबो केते प्रकार ब्रश होल्डर को हमें व्यवहार करूछु सर जनरली हमें तीन प्रकार ब्रश होल्डर को व्यवहार करूछु गोटे कोन ना स्प्रिंग लोडेड ब्रश होल्डर जो डायग्राम रे देखुछ आ गोटे होची ग्रेविटी फेड ब्रश होल्डर एटा देखुछ आ गोटे होची एडजस्टेबल ब्रश होल्डर जोटा एटा तीनटा जाक कोन ना इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ ब्रश होल्डर तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म आसिला कोन ना फंक्शन ऑफ ब्रश होल्डर सर ब्रश होल्डर रो काम कोन ये मेंटेन करिवो कंसिस्टेंट ब्रश प्रेशर कोन करला गोटे सर डीसी मशीन ने कंसिस्टेंट ब्रश प्रेशर को मेंटेन करिवा पई हमें ब्रश होल्डर रो काम लेथा एंश्योर प्रॉपर ब्रश अलाइनमेंट प्रॉपर ब्रश को अलाइनमेंट करिवो प्रिवेंट करिवो ब्रश डैमेज को facilitate brush replacement provide electrical insulation from the machine frame ये कौन करला ना सर फंक्शन ऑफ ब्रश होल्डर कौन होची सर ब्रश होल्डर रो काम होची ये मेंटेन करिवो कंसिस्टेंट ब्रश प्रेशर को कंटीन्यूअसली मेंटेन करिवो आ एंश्योर करिवो जे प्रॉपर भाबरे ब्रश रो अलाइनमेंट ठीक अछि ना नै आ प्रिवेंट करिवो ब्रश रो डैमेज को आ फैसिलिटेट करिवो ब्रश रो रिप्लेसमेंट जते बोले करूछो प्रोवाइड करिवो भलो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन फ्रॉम द मशीन फ्रेम रो भलो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड एबे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करिवि समस्त चार सेक्शन में आंसर दो क्वेश्चन नंबर 1 Which of the following statement regarding to carbon brush in a DC machine is correct? ये चारिटा स्टेटमेंट मध्यरु एमिति को स्टेटमेंट अछि करेक्ट बा ठीक अछि रिगार्डिंग टू कार्बन ब्रश को स्टेटमेंट एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर बी carbon brushes are a stationary part and press against the commutator against the press decline very good question number 2 in a DC generator the primary function of a brush
गोटे डीसी जनरेटर रे ब्रश रो प्राइमरी फंक्शन कौन? एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सर बी रिसीव डीसी करंट फ्रॉम कम्यूटेटर सर कम्यूटेटर से डीसी करंट को रिसीव करे। क्वेश्चन नंबर 3 if brush pressure is too low in a DC machine the most likely effect सर गोटे डीसी मशीन ने जते बेले ब्रश प्रेशर रो लो हे जीवो सेते बेले को प्रकार इफेक्ट देखेबा गोटे डीसी मशीन। एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्पार्किंग एट कम्यूटेटर रे कोन ना स्पार्किंग प्रोड्यूस हो। क्वेश्चन नंबर 4 the width of a carbon brushes is generally kept equal to गोटे कार्बन ब्रश रो विथ कम्यूटेटर कंपैरिजन ने केते रही। एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी विथ ऑफ 2 to 3 टाइम्स ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फंक्शन ऑफ ब्रश होल्डर एमानक मध्यरु एमिति गोटिए फंक्शन अछि जोटा फंक्शन ऑफ ब्रश होल्डर नुह। मेंटेन कंसिस्टेंट ब्रश प्रेशर एटा अछि एन्श्योर प्रॉपर ब्रश अलाइनमेंट एटा मध्ये अछि फैसिलिटेट ब्रश रिप्लेसमेंट एटा अछि इंक्रीज द रोटेशनल स्पीड ऑफ आर्मेचर एटा नै जो माने ऑप्शन नंबर बी डी देछ समस्तंकर करेक्ट आंसर। जो माने ए ब्रश टॉपिक रो जो पांचटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कली कहार केतेटा क्वेश्चन ठीक हैला ठीक समस्त चैट सेक्शन में मेसेज कलो सर मोर एतिकिटा क्वेश्चन ठीक है। वेरी गुड 5 ରୁ 5 आउ कहार रेस्पॉन्स समस्त दियो केही भी साइलेंट रोनी जते जण भी लाइव अछो। वेरी गुड देखो the best preparation for tomorrow is doing your best today जदि तमरो बेस्ट टुडे जदि तमरो टुडे रो बेस्ट दबो ना दिन ना दिन टुमारो तमरो प्रिपरेशन ता सब बेस्ट हो। तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म डिस्कशन करिबा जहार ना कोन पिले स्प्रिंग असेंबली। Spring assembly are components used in a brush assembly to provide tension to the brush in a DC machine. सर गोटे डीसी मशीन ने ब्रश को के टेंशन प्रोवाइडेड करूची ना स्प्रिंग असेंबली जे पचारिबो स्प्रिंग असेंबली रो काम कोन सर गोटे डीसी मशीन ने ब्रश को के टेंशन प्रोवाइडेड करूची ना स्प्रिंग असेंबली जनरली ब्रश को टेंशन प्रोवाइडेड कर। तापर आसिला टाइप्स ऑफ स्प्रिंग असेंबली। ये स्प्रिंग असेंबली केते प्रकार सर स्प्रिंग असेंबली जनरली तीन प्रकार गोटे होची कॉइल स्प्रिंग असेंबली आ गोटे होची लीफ स्प्रिंग असेंबली आ गोटे होची फ्लैट स्प्रिंग असेंबली। देखो एटा होची कोन ना एमिति कॉइल स्प्रिंग असेंबली एटा होची लीफ स्प्रिंग असेंबली एटा होची फ्लैट स्प्रिंग असेंबली। कौन कहिला स्प्रिंग असेंबली कहिले कौन बुझिबो सर गोटे डीसी मशीन ने ब्रश को जे टेंशन प्रोवाइडेड करूची ताको हम कहूची स्प्रिंग असेंबली। ए स्प्रिंग असेंबली तीन प्रकार कॉइल स्प्रिंग असेंबली लीफ स्प्रिंग असेंबली और फ्लैट स्प्रिंग असेंबली। तापर आसिला फंक्शन ऑफ स्प्रिंग असेंबली। ये जो स्प्रिंग असेंबली रहूची तार जनरली काम कोन ना अप्लाई constant force to the brushes से कौन करूची अप्लाई constant force to the brushes constant force अप्लाई करूची मेंटेन कंसिस्टेंट ब्रश प्रेशर ये मध्य कंटीन्यूअसली ब्रश प्रेशर को मेंटेन करूची रिड्यूस ब्रश वाइब्रेशन एंड नॉइज ब्रश रो वाइब्रेशन और नॉइज को मध्य कंट्रोल करूची एक्सटेंडेड ब्रश लाइफ को मध्य इंक्रीज करूची। तापर आसिला नोट्स पॉइंट
ये नोट पॉइंट कौन कहला ना स्प्रिंग असेंबली आर ए क्रिटिकल कंपोनेंट इन ए डीसी मशीन एटा गोटे डीसी मशीन नो क्रिटिकल कंपोनेंट ये एंश्योर करूची रिलायबल ऑपरेशन एफिशिएंट पावर ट्रांसफर एंड मिनिमाइज ब्रश वेयर लॉस ये सब जिनिस को मेंटेन करूची कौन कहला देख नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म तुम को पहले डिस्कशन कली जार ना कौन पहले स्प्रिंग असेंबली ये स्प्रिंग असेंबली रो काम कौन सर गोटे डीसी मशीन ने जो ब्रश को के टेंशन प्रोवाइडेड करछि स्प्रिंग असेंबली ये तीन प्रकार कॉइल स्प्रिंग लिप स्प्रिंग और फ्लैट स्प्रिंग स्प्रिंग असेंबली रो काम होछि कौन ये गोटे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करिवो मेंटेन करिवो ब्रश प्रेशर को रिड्यूस करिवो वाइब्रेशन एंड नॉइज ब्रश आउ एक्सटेंडेड करिवो ब्रश लाइफ रो ये जो स्प्रिंग असेंबली टा गोटे क्रिटिकल कंपोनेंट एथि पई कुआ जाउछि गोटे डीसी मशीन ये एंश्योर सब बळे करिवो एफिशिएंट पावर ट्रांसफर एंड मिनिमाइज लॉसेस एबे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करिबा जोटा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हमर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे क्वेश्चन नंबर 1 द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए स्प्रिंग असेंबली इन ए ब्रश असेंबली डीसी से पचारिबो डीसी मशीन ने ए जो ब्रश रो स्प्रिंग असेंबली लागुची तार जनरल प्राइमरी फंक्शन ता फर्स्ट स्टेज ता काम एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइडेड टेंशन टू द प्रोसेस ब्रश को कोन प्रोवाइडेड करूची ना टेंशन क्वेश्चन नंबर 2 which of the following not a type of spring assembly used in a machine एमानको मध्यरु कोटा गोटे स्प्रिंग असेंबली रो टाइप नो एटा लेटेस्ट क्वेश्चंस इसरो एक्सीलेंट सर कॉइल स्प्रिंग अछि लिप स्प्रिंग अछि फ्लैट स्प्रिंग अछि ऑप्शन नंबर डी हेलिकल गियर स्प्रिंग नहीं ऑप्शन नंबर हेलिकल स्प्रिंग नहीं क्वेश्चन नंबर 3 which function of a spring assembly directly help in minimize sparking at the commutator एमानको मध्यरु को स्प्रिंग असेंबली टा डायरेक्टली हेल्प करूची स्पार्किंग पे एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर maintaining consistent pressure maintaining consistent brush pressure question number 4 a reduction of brush vibration and noise by spring assembly mainly improve reduction of brush vibration and noise spring assembly द्वारा हमरो ब्रश रो रिडक्शन होउची कोन रिडक्शन ऑफ ब्रश रो वाइब्रेशन होउची नॉइज मध्य होउची ता द्वारा कोन इंप्रूवमेंट हमर होउची डिसीज एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ ए ब्रश कांटेक्ट कोन होउची इंप्रूव होउची क्वेश्चन नंबर 5 which of the following is the most appropriate consequence of improper spring pressure in a DC machine एमानक मध्यरु मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉन्सिक्वेंस इम्प्रॉपर स्प्रिंग जदी ब्रश रो स्प्रिंग असेंबली टा इम्प्रॉपर वे कोन एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसिला ऑप्शन नंबर सी सर अनरिलायबल ऑपरेशन एंड इनएफिशिएंट पावर ट्रांसफर ऑपरेशन ठीक ठाक हबनी और पावर ट्रांसफर मध्य ठीक ठाक हबनी ए जो स्प्रिंग असेंबली रो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन कली कहारे कतटा क्वेश्चन ठीक हैला टिके समस्त चैट सेक्शन में मैसेज कलो सर मोर एतिकटा क्वेश्चन ठीक हैला पांचटा रो वेरी गुड 5 रो 5 5 रो 4 एक्सीलेंट
नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म डिस्कशन करिबा पिले कोन ना आर्मेचर कोर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट कोन ना आर्मेचर कोर। ना आर्मेचर कोर इज द magnetic core of the rotor in a DC machine which spring टा पूरा गन मेटल ले तयारी। The armature core in the magnetic core in a rotor of a DC machine which support the armature winding। जे पचारिबो गोटे डीसी मशीन ने आर्मेचर कोर काम कोन सर जनरली आर्मेचर कोर होची कोन ना जो जगह रे आर्मेचर वाइंडिंग को हमें प्लेस करूचे रखुचे ताको हमें कहबा कोन ना आर्मेचर कोर। देखो एटा होची आर्मेचर कोर गोटे डायग्राम देछि ए भितर हमें कोन करूची ना आर्मेचर वाइंडिंग को हमें प्लेस करूचे। Silicon steel material is typically used in the armature core of a DC generator। DC generator रे आमे कोन यूज करूची आर्मेचर कोर हिसाब रे ना सिलिकॉन स्टील मटेरियल को व्यवहार करूची। जे पचारिबा आर्मेचर कोर को मटेरियल ले तयारी ना जनरली सिलिकॉन स्टील ले तयारी। तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म आसिला कोन ना फंक्शन ऑफ द आर्मेचर कोर provide a low reluctance magnetic path for the magnetic main flux। जे पचारिबो आर्मेचर कोर रो काम कोन सर आर्मेचर कोर रो काम होची प्रोवाइड करिवो लो रिलक्टेंस मैग्नेटिक पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स पाई लो रिलक्टेंस पाथ गोटे प्रोवाइडेड करिवो। सेकंड पॉइंट होची इट सपोर्ट एंड होल्ड द आर्मेचर वाइंडिंग सपोर्ट आउ होल्ड करिवो आर्मेचर वाइंडिंग को। थर्ड काम होची रिड्यूस एडी करंट लॉस बाय यूजिंग लैमिनेशन एडी करंट लॉस को मध्य लैमिनेशन द्वारा रिड्यूस करिवो। हेल्प इन इंप्रूविंग टॉर्क प्रोडक्शन कंटेन्स स्लॉट फॉर प्लेसिंग आर्मेचर कंडक्टर। जे पचारिबो आर्मेचर कोर रो काम कोन तमे ई चारटा काम मेनली कहि पारे। प्रथम काम होची कोन प्रोवाइड लो रिलक्टेंस पाथ। सेकंड काम इट सपोर्ट एंड होल्ड द आर्मेचर वाइंडिंग। थर्ड काम इट reduce armature core reduce eddy current loss by using lamination। help improving in production contain slot कोन placing armature conductor। तापर आसिला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्मेचर कोर। जेतु एते गुडे फंक्शन अछि आर्मेचर कोर सेति पई आर्मेचर कोर को डिजाइन कला बेले एई फीचर्स बा ए कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करा जाय। कौन कौन ना हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी लो मैग्नेटिक रिलक्टेंस हाई सैचुरेशन पॉइंट लो कोर लॉसेस। जे पचारिबा आर्मेचर कोर चारिटा मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन सर प्रथम मेन कैरेक्टरिस्टिक होची हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होची लो मैग्नेटिक रिलक्टेंस। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होची हाई सैचुरेशन पॉइंट। फोर नंबर कैरेक्टरिस्टिक होची लो कोर लॉसेस। एबे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करिबा जोडा तमरो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम रा आसिथि। क्वेश्चन नंबर 1 द आर्मेचर कोर इन ए डीसी मशीन प्राइमरीली एक्ट एज। आर्मेचर कोर जो डीसी मशीन न प्राइमरी काम कोन एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोन करे ना मैग्नेटिक कोर इन द रोटर मैग्नेटिक कोर। क्वेश्चन नंबर 2 which material typically used for armature core in a DC generator। DC generator रे को मटेरियल को हमें प्रिफर करू। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन स्टील। डीसी आर्मेचर कोर गोटे डीसी जनरेटर रे आर्मेचर कोर को मटेरियल ले तयारी ना सिलिकॉन स्टील। क्वेश्चन नंबर 3 why are lamination used in the armature core। आर्मेचर कोर को हमें कोन पई लैमिनेशन करू। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस को रिड्यूस करिया पई आर्मेचर कोर को व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 4
which of the following not a characteristic of good armature core एमानक मध्यरु को कैरेक्टरिस्टिक नुह आर्मेचर कोर आजिकल एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हाई कोर लॉसेस हाई सैचुरेशन पॉइंट अछि लो मैग्नेटिक रिलक्टेंस अछि हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी अछि क्वेश्चन नंबर 5 the slot provided in armature core mainly used for जो आर्मेचर कोर रे स्लॉट प्रोवाइडेड करा जाउछि तार काम कोन एक्सीलेंट समस्तंकर काम कोन ऑप्शन नंबर बी प्लेसिंग आर्मेचर कंडक्टर को प्लेस करिया पई आर्मेचर रे जनरली आमे स्लॉट प्रोवाइडेड करूछि ए जो आर्मेचर कोर रु पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन कली कहारे केतटा क्वेश्चन ठीक हैला ठीक समस्त चैट सेक्शन में मैसेज कर सर मोर एतिकटा क्वेश्चंस ठीक हैला वेरी गुड चारी चारी वेरी गुड नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म डिस्कशन करिबा जार नाम कोन पिले ना आर्मेचर वाइंडिंग द आर्मेचर वाइंडिंग इज द वाइंडिंग ऑन द रोटर ऑफ ए डीसी मशीन जे पचारिबा आर्मेचर वाइंडिंग ता कोठी लागुची ना रोटर रे लागुची which carry the current that interact with the magnetic field to produce the torque जे पचारिबो आर्मेचर वाइंडिंग कोठी लागुची सारे रोटर रे लागुची ये आर्मेचर वाइंडिंग कोन कैरी करूची ना करंट कैरी करिकी कोन ना टॉर्क प्रोड्यूस करूची कोन प्रोड्यूस करूची ना टॉर्क कारण डीसी मशीन ने काम कोन डीसी जनरेटर हो कि डीसी मोटर हो कोन मैकेनिकल टॉर्क ही से प्रोड्यूस करे आर्मेचर वाइंडिंग कोठी रहउची ना डीसी मशीन ने ना रोटर रे आर्मेचर वाइंडिंग डीसी करंट कैरी करिकी कोन करूची आर्मेचर करंट कैरी करिकी कोन करूची ना टॉर्क प्रोड्यूस करूची तापर आसिला फंक्शन ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो माने स्टार मार्क दो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे ई स्लाइड रो क्वेश्चंस तोर ही आसीची कोन ना प्रथम काम होची आर्मेचर वाइंडिंग कैरी करंट आर्मेचर वाइंडिंग को करंट कैरी करूची ना आर्मेचर करंट को कैरी करूची सेकंड काम प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड दैट इंटरैक्ट विथ स्टेशनरी फील्ड फ्लक्स ये कोन करूची ना आर्मेचर वाइंडिंग प्रोड्यूस करूची कोन ना मैग्नेटिक फील्ड कहा सहित इंटरैक्ट होई कि ना स्टार्टर फील्ड सहित इंटरैक्ट होई कि से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करूची थर्ड पॉइंट इट जनरेट टॉर्क आर्मेचर वाइंडिंग रा काम कोन ना टॉर्क को जनरेट करू चार नंबर काम इट जनरेट वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर टर्मिनल अक्रॉस रे मध्य वोल्टेज जनरेट करू पॉइंट नंबर 5 इट फैसिलिटेट द पावर ट्रांसफर बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम जो से इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो कि मैकेनिकल सिस्टम हो आर्मेचर वाइंडिंग रा काम कोन ताको इलेक्ट्रिकल मैकेनिक कोन पावर ताको ट्रांसफर करियो 6 नंबर पॉइंट इट प्ले क्रूशियल रोल इन द मशीन एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ए आर्मेचर वाइंडिंग ता तुमको डिसाइडेड करूची कोन मशीन नो को भले एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस आर्मेचर वाइंडिंग रो काम कोन प्रथम काम ये आर्मेचर करंट को कैरी करियो सेकंड काम ये प्रोड्यूस करिवो मैग्नेटिक फील्ड स्टार्टर फील्ड प्रेजेंस राशि की आ ये जनरेट करिवो टॉर्क आ आर्मेचर टर्मिनल ले वोल्टेज जनरेट करिवो आ ये पावर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम रे पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को फैसिलिटेट करिवो आ क्रूशियल एफिशिएंसी भलो रहइबो परफॉर्मेंस को मध्ये होनो तापर आसिला आर्मेचर वाइंडिंग कंसिस्ट जो आर्मेचर वाइंडिंग देखुचो ए टाइप रो आर्मेचर वाइंडिंग एथिरे तीनटा जिंस रहउची गोटे कोन ना हेतरे कंडक्टर रहउची से कंडक्टर में भी कॉपर रहि परिबो नहले एल्युमिनियम रहि परिबो आ इन्सुलेशन प्रोवाइडेड करा जाउची सेटा वार्निश टेप नल एनामेट नर नंबर ऑफ टर्न मल्टीपल लूप ऑफ वायर जते बेले आर्मेचर वाइंडिंग तो हम देखुछु सेतरे तीनटा जिंस जनरली प्रेजेंट रहउची कोन गोटे कंडक्टर से कंडक्टर टा मे भी कॉपर रे तयारी हे पारे नहले एल्युमिनियम रे तयारी हे जो इन्सुलेशन प्रोवाइडेड करा जाता वार्निश टेप नल एनामेट
तापर टर्न कोन मल्टीपल लूप वायर एमिति गुडे गुडे हेकि रहउची कोन ना आर्मेचर वाइंड। एबे किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिबा जोटा फ्रीक्वेंटली आस्क करछि तमर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 1, armature winding in a DC machine is placed on। DC machine ने armature winding को कोठी रखा जाए। एक्सीलेंट, समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रोटर। क्वेश्चन नंबर 2, the primary function of armature winding in a DC machine। DC machine no primary function कौन armature winding। एक्सीलेंट, समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कैरी करंट दैट इंटरैक्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड। आर्मेचर करंट को कैरी करके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेटोजन से ट्रेड कर। क्वेश्चन नंबर 3, which type of armature winding is suitable for high current low voltage application। एमानक मध्यरु एमिति को वाइंडिंग अछि हाई करंट और लो वोल्टेज एप्लीकेशन ପାଇଁ व्यवहार। एक्सीलेंट, समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लैप वाइंडिंग। डिस्कशन करिबा लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 4, वेव वाइंडिंग इज जनरली प्रिफर। वेव वाइंडिंग कोन पे प्रिफर करा जाउछ। ऑप्शन नंबर बी लो करंट हाई वोल्टेज ପାଇଁ वेव वाइंडिंग को प्रिफर करा जाउछ। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following not a component of armature winding। एमानक मध्यरु आर्मेचर वाइंडिंग ପାଇଁ कोटा गोटे कंपोनेंट नो नॉट ओएचपीसी रो फेवरेट क्वेश्चन जो नॉट रिलेटेड क्वेश्चंस। एक्सीलेंट सर कंडक्टर अछि इन्सुलेशन अछि टर्न्स किंतु कम्यूटेटर ता ए जो आर्मेचर वाइंडिंग रो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन कली कहार केतेटा क्वेश्चन ठीक हैला टिके समस्त चैट सेक्शन में मैसेज करा। वेरी गुड चलिए तापर डिस्कशन करिबा नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन ना सर लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग रो प्रथमे कोन ना डेफिनेशन कोन। Each coil of armature is lap back to back succeeding coil from overlapping connection। सर जो वाइंडिंग रो बैक टू बैक कनेक्शन हेता जो वाइंडिंग को एमिति बैक टू बैक कनेक्शन हेता है सेही वाइंडिंग को हमें जनरली कोन कहउची ना लैप वाइंडिंग कहउची। कनेक्शन the end of the armature coil is connected to one adjacent segment on the commutator। देखो गोटे कॉइल एंड रे एडजेसेंट रे आ गोटे कनेक्टेड है एटा होची कोन ना डायग्राम। लैप वाइंडिंग को एमिति गोटे कॉइल साइड रे आ गोटे कॉइल एडजेसेंट को जॉइन करा। तापर पैरेलल पाथ द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल। लैप वाइंडिंग रे जति की पैरेलल पाथ है सेति की परिमाण रो नंबर ऑफ पोल है। तापर एडिशनल कॉइल गोटे लैप वाइंडिंग रे हमें जनरली इक्वलाइजर रिंग को व्यवहार करूछ। वाइंड और लैप वाइंडिंग को गोटे हमें कंप्लीट वाइंडिंग मूल्य कहूछ। लैप वाइंडिंग रे नंबर ऑफ ब्रशेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। लैप वाइंडिंग टे गोटे आर्मेचर अक्रॉस रे आ लैप वाइंडिंग रे करंट केमिति फ्लो हो गोटे कंडक्टर आईसी इज इक्वल टू ना आर्मेचर करंट डिवाइडेड बाय पैरेलल। लैप वाइंडिंग रो एफिशिएंसी सब बळे लो। लैप वाइंडिंग रो वाइंडिंग कॉस्ट टिके हाई थाए। लैप वाइंडिंग यूज करा जाउची लेस ईएमएफ जो जगह रे लो वोल्टेज और हाई करंट से जगह रे हमें लैप वाइंडिंग को प्रेफर करूछ। कोन कहिला ए लैप वाइंडिंग रो तुमको 11 टा इंपोर्टेंट पॉइंट कहिली बहुत यूज करा जाउची। ए 11 टा इंपोर्टेंट पॉइंट तमे लाइफ रे जे कोनसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोछ एथुर गोटे क्वेश्चंस तमार पळे आस। लैप वाइंडिंग रे कोन सर पोल इज इक्वल टू पैरेलल पाथ
ब्रश इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल लैप वाइंडिंग को कंप्लीट वाइंडिंग कहवा लैप वाइंडिंग रो कॉस्ट हाई लैप वाइंडिंग रो लो एफिशिएंसी लैप वाइंडिंग रे लेस ईएमएफ प्रोड्यूस होची लो वोल्टेज और हाई करंट एप्लीकेशन जनरली हमें लैप वाइंडिंग को प्रेफर करछि तापर आसिला सेकंड इंपोर्टेंट टर्म कोन वेव वाइंडिंग डेफिनेशन कोन द coil of armature winding wave shape progressing forward and backward armature ये कौन ना फॉरवर्ड रे कनेक्ट हे परिबो आ बैकवर्ड रे मध्य कनेक्टेड द कनेक्शन देखो को टाइप रो द एंड ऑफ द आर्मेचर कॉइल कनेक्टेड टू कम्यूटेटर सेगमेंट एंड सम डिस्टेंस अपार्ट किछि डिस्टेंस रखि कि कम्यूटेटर सेगमेंट देखो कनेक्टेड अछि किंतु सेटा देखो लागी लागी कनेक्ट हेतिला एटा देखो डिस्टेंस parallel path ए वेव वाइंडिंग रे parallel path रो वैल्यू सब बेले कांस्टेंट जाके 2 रो तापर एडिशनल कॉइल वेव वाइंडिंग रे डमी कॉइल हमर व्यवहार करा जाउची एडिशनल कॉइल हिसाब ए वेव वाइंडिंग को हमें इनकम्प्लीटेड वाइंडिंग कहूची वेव वाइंडिंग को हमें इनकम्प्लीटेड वाइंडिंग एगो कंप्लीट करिया पय डमी कॉइल यूज करा जाउची डमी कॉइल रो काम होची मैकेनिकल बैलेंस को रिड्यूस करिया तापर आसिला नंबर ऑफ ब्रशेस गोटे वेव वाइंडिंग रे ब्रश रो वैल्यू सब बेले फिक्स माने 2 आ कंडक्टर रे केते करंट फ्लो होउची गोटे वेव वाइंडिंग रे IC इज इक्वल टू कंडक्टर करंट इज इक्वल टू आर्मेचर करंट डिवाइडेड बाय 2 ए वेव वाइंडिंग रे एफिशिएंसी जनरली हाई वेव वाइंडिंग रो वाइंडिंग कॉस्ट टा टिके लो वेव वाइंडिंग रो ईएमएफ टिके मोर वेव वाइंडिंग यूज करा जाउची हाई वोल्टेज और लो करंट एप्लीकेशन में जनरली हमें वेव वाइंडिंग को प्रेफर करछि क्विक रिकैप कोन सर वेव वाइंडिंग रे पैरेलल पाथ होछि 2 ब्रश होछि 2 इनकम्प्लीटेड वाइंडिंग लो कॉस्ट एफिशिएंसी हाई मोर ईएमएफ यूज करा जाउछि हाई वोल्टेज एंड लो करंट एई 11 टा पॉइंट जदी मन रखि दबो जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे तमे गोटे क्वेश्चंस को अटेंड करियो तापर तो डिफरेंस जेमिति दे देछि सेम जिंस क्वेश्चन नंबर 1 डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे क्वेश्चंस गुरा आसुची क्वेश्चन नंबर in a simplex lap winding the number of parallel path is equal to excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑफ पोल देखो कौन कहिला जते बेले लैप वाइंडिंग को कंसीडर करा जाउची ना नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए जो ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू m into p ए जो m कौन ना मल्टीप्लिसिटी फैक्टर m कौन ना मल्टीप्लिसिटी फैक्टर जते बेले m इज इक्वल टू 1 फॉर सिंप्लेक्स वाइंडिंग पाई गुणिबो जते बेले m इज इक्वल टू 2 डुप्लेक्स वाइंडिंग पाई जते बेले m इज इक्वल टू 3 ते बेले ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग पाई मन रखिबो सब बेले m रो वैल्यू जते बेले सिंप्लेक्स वाइंडिंग देछि 1 गुणा जाए जते बेले डुप्लेक्स वाइंडिंग देछि 2 गुणा जाए जते बेले ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग देछि 3 गुणा जाए क्वेश्चन नंबर 2 which statement correctly differentiate wave winding from lap winding एमान को मध्यरु कोटा गोटे करेक्टली डिफरेंशिएट करूची कहलो वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसी गलानी सर ऑप्शन नंबर सी वेव वाइंडिंग ऑलवेज हैज टू पैरेलल पाथ सर वेव वाइंडिंग रे दुई गोटी पैरेलल पाथ रु क्वेश्चन नंबर 3 which of the following combination is correct एमान को मध्यरु को कॉम्बिनेशन ता करेक्ट अछि के समस्त चार्ट सेक्शन एटा इंपोर्टेंट आ एई टाइप रो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस मध्ये एग्जाम एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर वेव वाइंडिंग रे लो वोल्टेज आ हाई करंट सी दोजो
ओके ओके सिक्स सॉरी रॉन्ग आंसर लैप वाइंडिंग यूज करा जाउची कोन लैप वाइंडिंग रे लो वोल्टेज हाई करंट आउ वेव वाइंडिंग रे हाई वोल्टेज लो करंट एटा स्टार मार्क मारिक मन कंफ्यूजन हवार नहीं 3 नंबर करेक्ट आंसर अच्छे सी है लैप वाइंडिंग यूज करा जाउची लो वोल्टेज हाई करंट पाई वेव वाइंडिंग यूज करा जाउची हाई वोल्टेज लो क्वेश्चन नंबर 4 which additional component is associated with wave winding एमानक मध्यरु को एडिशनल कंपोनेंट को आमे व्यवहार करूछु वेव वाइंडिंग एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर आसी गलानी सर ऑप्शन नंबर बी डमी कॉइल काम कोन मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइडेड करी क्वेश्चन नंबर 5 why does wave winding produce higher EMF than lap winding कोन पाई आमे गोटे डीसी मशीन ने वेव वाइंडिंग रे अधिक परिमाण रो EMF पाउछ एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फ्यूअर पैरेलल वेव वाइंडिंग रे पैरेलल पाथ रे करू ये जो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन कली लैप और वेव वाइंडिंग रो कहार केतरा क्वेश्चन ठीक हैला ठीक समस्त चैट सेक्शन में मैसेज कलो सर मोर ये दिखता क्वेश्चन ठीक है वेरी गुड पांचटा जो माने भी क्लास को लास्ट पर्यंत देखिछो समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद हमर ए जो 60 नंबर सीरीज रो हमर एटा केते नंबर क्लास ऑलरेडी हमर आज एटा 9 नंबर 10 नंबर क्लास कंप्लीट है और रिमेनिंग 50 टा इंटरेस्टिंग सेशंस रहबो तुमको जे कोनसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देबो लाइफ रे तुमको बहुत हेल्प करबो रहुची समस्त को तो अलग अलग बैच रे पढ़ी देइथिली एटा देखिबो सीरीज टा 60 टा सीरीज टा तमरो समस्त को कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे बहुत हेल्प करबो रहुची जय हमर जो 60 रो मैराथन सीरीज चलितला 60 रो ए मैराथन सीरीज रे आज हमर क्लास नंबर 11 जाय पहुंची छे ए क्लास नंबर 11 रो ऑलरेडी मो तमन को पई केतेटा क्लास ना 10 टा क्लास कंप्लीट करि देइची जो माने भी देखिनो और रिकॉर्डेड सेक्शन ने 10 टा क्लास रो पीडीएफ अछि आ वीडियो अछि समस्त देखिनो जय जगन्नाथ भाई आज हमें डिस्कशन करिबा क्लास नंबर 11 ए क्लास नंबर 11 को क्लास डिस्कशन करिबा ना कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन नो क्लास नंबर 3 आज रो टॉपिक ए जो क्लास नंबर 3 रे आज रो टॉपिक रे तमन को कोन डिस्कशन करिबी ना कम्यूटेटर कोन सम इंपोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कम्यूटेटर तापर डिस्कशन करिबा टाइप्स ऑफ कम्यूटेटर तापर डिस्कशन करिबा बियरिंग कोन तापर डिस्कशन करिबा फंक्शन ऑफ बियरिंग कोन तापर सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ बियरिंग कोन मेंटेनेंस प्रोसेस ऑफ बियरिंग कोन तापर डिस्कशन करिबा टाइप्स ऑफ बियरिंग कोन नेक्स्ट डिस्कशन करिबा बॉल बियरिंग कोन रोलर बियरिंग कोन स्लीव बियरिंग कोन थ्रस्ट बियरिंग कोन तापर मोटर आ जनरेटर पई शाफ्ट कोन फंक्शन ऑफ शाफ्ट कोन टाइप्स ऑफ शाफ्ट कोन फैन रेगुलेटर कोन टर्मिनल बॉक्स कोन ए कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन नो आज लास्ट क्लास माने क्लास नंबर 3 ऑलरेडी दीटा क्लास डिस्कशन कर देछि ईच एंड एवरी पार्ट को मो डिटेल डिस्कशन करिछि जो माने भी देखिनो और रिकॉर्डेड सेक्शन ने देखिनबो आज स्टार्ट करिबा क्लास नंबर 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन समस्त रेडी तो जो माने रेडी अच्छे समस्त कंस्ट्रक्शन पार्ट जेनिया पई ठीक समस्त चार्ट सेक्शन यस देखो सब पीडीएफ आज दिया जी होला वेरी गुड देखो डिस्कशन करिबा कोन सारे ना कम्यूटेटर A commutator is a rotary electrical switch that periodically reverses the current between rotor and external circuit.
जे पचारिबो पिले कम्यूटेटर कहिले कोन बुझिबो तमे सिंगल वर्ड रे कहबो सर कम्यूटेटर होची गोटे रोटरी इलेक्ट्रिकल स्विच। कम्यूटेटर होची कोन ना रोटरी इलेक्ट्रिकल स्विच। ये कौन करे सर पीरियोडिकली रिवर्स द करंट बिटवीन रोटर एंड एक्सटर्नल सर्किट। रोटर आउ एक्सटर्नल सर्किट को करंट को से पीरियोडिकली कौन करे ना रिवर्स करे। तापर आसिला सम इंपोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कम्यूटेटर। ये जो इंपोर्टेंट पॉइंट न ताको स्टार मार्क रखिबो जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे एटू गोटी क्वेश्चन 100% कौन आसी। प्रथम पॉइंट कौन कहला सर इट इज मेड ऑफ हाइड्रोन कॉपर। एटा बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसीची। कम्यूटेटर कोथरे तयारी सर कम्यूटेटर मेड इन हाइड्रोन कॉपर। Second point, there is a mica insulation between two commutator segment. दीटा commutator segment भितर को प्रकार insulation provided करा जाउची ना mica insulation provided। Third point, is it a rotating part of a DC machine? Commutator टा गोटे को पार्ट सर commutator टा होची गोटे rotating part। 4 नंबर पॉइंट, कम्यूटेटर इज केप्ट और क्यूड टू द शाफ्ट। कम्यूटेटर टा कोठी लागिची ना शाफ्ट रे लागिची। 5 नंबर पॉइंट, इन डीसी मशीन नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट आर इक्वल टू नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल। सर गोटे डीसी मशीन ने केतुटा नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट लागे सर जतिकिटा नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल सेतिकी नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट। Point number 6. The main function of commutator in a DC machine is change AC voltage into DC voltage by vice versa. जेमिति कि DC जनरेटर रे कम्यूटेटर को आमे कहूचे मैकेनिकल रेक्टिफायर, DC मोटर रे कम्यूटेटर को कहूचे मैकेनिकल इन्वर्टर। हम माने DC जनरेटर रे कम्यूटेटर रो काम कोन सर DC जनरेटर रे कम्यूटेटर रो काम होची AC को DC रे कन्वर्ट करिवो। डीसी मोटर रे कम्यूटेटर काम होची डीसी को एसी रे कन्वर्ट करियो। सेति पई डीसी जनरेटर रे कम्यूटेटर ना होची कोन ना मैकेनिकल रेक्टिफायर और डीसी मोटर रे का ना होची कोन ना मैकेनिकल इन्वर्टर। देखो कोन कहिली देखो कम्यूटेटर सम इंपोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कम्यूटेटर। कम्यूटेटर को मटेरियल तयारी सर कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन कॉपर रे तयारी। ए कम्यूटेटर रे को प्रकार इन्सुलेशन प्रोवाइडेड करा जाउची दीटा कम्यूटेटर सेगमेंट भितरे सर माइका इन्सुलेशन प्रोवाइडेड करा जाउची। ए कम्यूटेटर टा गोटे डीसी मशीन को पार्ट सर रोटेटिंग पार्ट। कम्यूटेटर टा जनरली कोठी लागुची ना शाफ्ट रे लागुची। डीसी मशीन ने केतेटा कम्यूटेटर सेगमेंट थाए सर जेतिकिटा आर्मेचर कॉइल सेतिकी नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट थाए। कम्यूटेटर रो मेन फंक्शन कोन सर आपण जदी डीसी जनरेटर कथा कहउछथि कम्यूटेटर रो काम होची एसी को डीसी कन्वर्ट करिवो जहा को मैकेनिकल रेक्टिफायर मध्ये कहउछथि। सेदी डीसी मोटर रे कम्यूटेटर रो काम कोन डीसी टू एसी रे कन्वर्ट करिवो जहा को मैकेनिकल इन्वर्टर कहउछथि। तापरे आसिला नोट पॉइंट। नोट पॉइंट ता बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पचारिछ। ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ कम्यूटेटर डीसी जनरेटर आर नॉट यूजुअली डिजाइन 650 वोल्ट। कौन कहिला ना कम्यूटेटर रो लिमिटेशन जो डीसी जनरेटर रे बिल्ड करते ना 650 वोल्ट। कम्यूटेटर आर ऑलवेज रिमेन इन कांटेक्ट विथ कार्बन ब्रश। कम्यूटेटर ता कहा कांटेक्ट रे सब आसी थाए सर कम्यूटेटर ता जनरली कार्बन ब्रश कांटेक्ट रे आसी थाए। द आर्मेचर कंडक्टर आर सोल्डर इन द कम्यूटेटर सेगमेंट। ये जो आर्मेचर कंडक्टर सोल्डर ता कोन ना कम्यूटेटर सेगमेंट रे लागि थाए। पुणी तीनटा इंपोर्टेंट पॉइंट नोट पॉइंट रे कोन कहिला सर कम्यूटेटर नो लिमिटेशन केते कम्यूटेटर ना 6 डीसी जनरेटर रे 650 वोल्ट पर्यंत व्यवहार हे परिबो। कम्यूटेटर ऑलवेज रिमेन कांटेक्ट विथ कोन ना कार्बन ब्रश कांटेक्ट सहित आसे। आ आर्मेचर कंडक्टर शोल्डर कार्य कम्यूटेटर सेगमेंट प्रेजेंट होता। आ तापर आसीला नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कोन ना टाइप्स ऑफ कम्यूटेटर। जनरली कम्यूटेटर हमर केते प्रकार सर कम्यूटेटर होची तीन प्रकार। गोटे होची सिंपल कम्यूटेटर आ गोटे होची कंपनसेटेड कम्यूटेटर आ गोटे होची ब्रशलेस कम्यूटेटर। केते प्रकार जनरली कम्यूटेटर अछि सर जनरली हमें तीन प्रकार कम्यूटेटर देखिया पाउ। गोटे होची सिंपल कम्यूटेटर, गोटे होची कंपनसेटेड कम्यूटेटर आ गोटे होची ब्रशलेस कम्यूटेटर। इस सिंपल कम्यूटेटर इट इज सुइटेबल फॉर स्मॉल डीसी मशीन। स्मॉल मशीन ପାଇଁ को प्रकार कम्यूटेटर सुइटेबल ना सिंपल कम्यूटेटर।
It is use a large machine and improve performance. Large machine ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର commutator ନା compensated commutator. It is use a brushless DC machine illuminating the need. Brushless DC motor ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ନା brushless commutator ମଧ୍ୟ ଦରକାର। এই তিନିଟା applications ବହୁତ ସାରା competitive exam ରେ ପଚାରିଛି। ଏବେ ଡେରି ନ କରି क्वेश्चंस को କିଛି most frequently asked competitive exam ରେ जो क्वेश्चंस पड़िଛି सेगुडा डिस्कशन करिए। क्वेश्चन नंबर 1 केही भी साइलेंट रहिबोनी समस्त निज निजर रेस्पॉन्स शेयर करिए। व्हाट इज ए कम्यूटेटर? कम्यूटेटर कहिले कोन बुझछ? कम्यूटेटर को गोटे को टाइप रो स्विच पर एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर कम्यूटेटर को गोटे रोटरी इलेक्ट्रिकल स्विच पर कम्यूटेटर को गोटे कोन पर जाउची सर कम्यूटेटर को गोटे रोटरी इलेक्ट्रिकल स्विच पर क्वेश्चन नंबर 2 ए कम्यूटेटर इज मेनली यूज्ड इन कम्यूटेटर को कोठी मेनली व्यवहार करा जाउची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन नंबर बी सर कम्यूटेटर को हमें डीसी मशीन ने व्यवहार करछु कम्यूटेटर को कोठी ना डीसी मशीन ने व्यवहार करछु क्वेश्चन नंबर 3 ए कम्यूटेटर इज मेड अप कम्यूटेटर कोथरे तयारी कम्यूटेटर इज मेड अप एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर कम्यूटेटर जनरली हाइड्रोजन कपर रे तयारी कम्यूटेटर कोथरे तयारी ना हाइड्रोजन कपर रे क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज प्लेस्ड बिटवीन टू कम्यूटेटर सेगमेंट दीटा कम्यूटेटर सेगमेंट भीतर को प्रकार कोन प्लेस करा जाय को प्रकार इंसुलेशन दीटा कम्यूटेटर सेगमेंट भीतर प्रोवाइडेड करा जाय एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर माइका इंसुलेशन प्रोवाइडेड करा जाय क्वेश्चन नंबर 5 द कम्यूटेटर इज कम्यूटेटर को कौन कहउछंती एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए रोटेटिंग पार्ट ऑफ डीसी मशीन सर कम्यूटेटर को कहउछंती कोन गोटे रोटेटिंग पार्ट ऑफ डीसी मशीन क्वेश्चन नंबर 6 द कम्यूटेटर इज माउंटेड ऑन द कम्यूटेटर टा को कोठी माउंट करा जाउची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर कम्यूटेटर को हमें जनरली शाफ्ट रे माउंट करूछ क्वेश्चन नंबर 7 इन डीसी जनरेटर कम्यूटेटर एक्ट एज डीसी जनरेटर रे कम्यूटेटर को को बळे और व्यवहार करा जाय एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सर डीसी जनरेटर रे जनरली हम कम्यूटेटर को मैकेनिकल रेक्टिफायर कहता क्वेश्चन नंबर 8 इन डीसी मोटर द कम्यूटेटर एक्ट एज डीसी मोटर रे कम्यूटेटर को जनरली हमें कौन कहता एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मैकेनिकल इन्वर्टर कहता क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ कम्यूटेटर एमानक मध्यरु कोटा गोटे कम्यूटेटर टाइप नो सर सिंपल कम्यूटेटर अछि कंपेंसेटेड कम्यूटेटर अछि ब्रशलेस कम्यूटेटर किंतु रूलर कम्यूटेटर नै ऑप्शन नंबर डी जो मन देछ समस्त करेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 डीसी जनरेटर आर जनरली नॉट डिजाइन डीसी जनरेटर केते वोल्ट ऊपर को डिजाइन करा जाय नै एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 600 एक कम्यूटेटर जो 10टा क्वेश्चन डिस्कशन बाहर कतटा क्वेश्चन ठीक हैला कि समस्त चैट सेक्शन में मैसेज कलो सर एक कम्यूटेटर मन 10टा रो 5टा ठीक हैला जहार जतरा क्वेश्चन ठीक हैला समस्त समस्तंगर 10 रु 10 एक्सीलेंट
आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वेरी गुड है पीडीएफ शेष में क्वेश्चन शेष में आंसर प्रोवाइडेड कर देछि कार किछ असुविधा होनी समझते एबे नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म के लिए डिस्कशन करिबा जहार ना कोन नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म जहार ना पिले होछि कोन ना बियरिंग जहार ना कोन ना बियरिंग बियरिंग इन ए डीसी machine play a crucial role is supporting for the rotor allow the smooth rotation जे पचारिबो गोटे डीसी machine रे बियरिंग रो काम कोन सर बियरिंग रो काम होउची रोटर को सपोर्ट प्रोवाइडेड करिवो एंड स्मूथ ऑपरेशन करिवो बियरिंग रो काम कोन गोटे डीसी machine ने सर डीसी machine ने बियरिंग रो काम होउची रोटर को सपोर्ट प्रोवाइडेड करिवो और स्मूथ एंड साइलेंट मध्ये ऑपरेशन करिवो तापर आसीला फंक्शन ऑफ बियरिंग बियरिंग रो काम कोन सर प्रथम काम होची इट सपोर्ट द रोटर एंड अलाउ स्मूथ रोटेशन रोटर को से सपोर्ट प्रोवाइडेड करिवो एवं स्मूथ रोटेशन करिवो दुई नंबर काम होची रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वेयर लॉसेस फ्रिक्शन एंड वेयर लॉस को कम करिवो तीन नंबर काम होची इट सपोर्ट द एक्सियल एंड रेडियल लोड को से सपोर्ट करिवो चार नंबर काम होची एनेबल हाई स्पीड ऑपरेशन करिवो पांच नंबर काम होची मिनिमाइज वाइब्रेशन एंड नॉइज करिवो से पचारिबो पिले जनरली हमर जो बियरिंग व्यवहार करूछु ये बियरिंग रा बेसिक फंक्शन कोन तमे कहबो सर बियरिंग व्यवहार करिबा द्वारा रोटर को से सपोर्ट करूची एवं स्मूथ रोटेशन ପାଇଁ को हेल्प करूची आउ रिड्यूस करूची फ्रिक्शन एंड वेयर लॉसेस सपोर्ट करूची से एरियल लोड हो कि एक्सियल लोड हो कि रेडियल लोड हो हाई स्पीड ऑपरेशन ପାଇଁ एनेबल करूची आउ नॉइज वाइब्रेशन से मिनिमाइज करूची तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्टर कोन ना सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ बियरिंग सर जत्ते बेले मु बियरिंग को सिलेक्शन करूची ना सेते बेले एई सातटा फैक्टर को ध्यान दूची प्रथमे कोन ना लो कैपेसिटी देखुची स्पीड रो रेटिंग देखुची ऑपरेटिंग टेंपरेचर देखुची लुब्रिकेशन देखुची नॉइज एंड वाइब्रेशन को लिमिट करूची ना नहीं देखुची शाफ्ट साइज एंड टाइप ऊपर देखुची मशीन डिजाइन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऊपर देखुची जते बेले मो सर गोटे बियरिंग को सिलेक्शन करूची ना से बियरिंग को सिलेक्शन करिया पूर्व ए सातटा फैक्टर को देखुची लोड कैपेसिटी केते नै पारिबो स्पीड रेटिंग केते हबो ऑपरेटिंग टेंपरेचर केते हबो लुब्रिकेशन भलो अछि ना नै नॉइज और वाइब्रेशन को लिमिट करूची ना नै शाफ्ट साइज और टाइप ऊपर डिपेंड करूची ना नै मशीन रो डिजाइन और कॉन्फ़िगरेशन ऊपर डिपेंड करूची ना नै से सब सातटा जिंस को फैक्टर को मु आखिया करे रखी कि मु बियरिंग सब बेले सिलेक्शन करे एबे तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कोन देखिबा मेंटेनेंस प्रोसेस ऑफ बियरिंग बियरिंग कैंडल सिलेक्शन जते बेले बियरिंग को आप सिलेक्शन करि दोउची ताको लाइफ टाइम यूज करिबा ना मेंटेनेंस करिबा किसी मेंटेनेंस मध्य आवश्यकता पड़ता है बियरिंग रो कोन मेंटेनेंस देखिए पड़ता है रेगुलर इंस्पेक्शन तुमको करिया पड़ो बियरिंग ठीक अछि ना नहीं रेगुलर इंस्पेक्शन करिवो लुब्रिकेशन एंड क्लीनिंग करिवो तीन नंबर काम होची रिप्लेसमेंट एट रिकमेंडेड इंटरवल ऊपर ताको रिप्लेसमेंट मध्य करिया पड़िवो मॉनिटरिंग वाइब्रेशन एंड टेंपरेचर को मॉनिटरिंग करिया पड़िवो एडजस्टिंग एंड रिप्लेसिंग दरकार पड़ले एज पर नीडेड एडजस्ट करिवो दरकार पड़ले रिप्लेसिंग मध्य करि परिवो कोन ना बियरिंग कोन कहिला सर मेंटेनेंस प्रोसेस ऑफ बियरिंग जते बेले गोटे बियरिंग को जो लगेइले हमें ताको लाइफ टाइम पर्यंत व्यवहार करि परिबा नाही से बियरिंग को मझिरे मझिरे मेंटेनेंस करियो कम मेंटेनेंस मागियो बियरिंग सर बियरिंग को रेगुलर इंस्पेक्शन करिबा दरकार लुब्रिकेशन एंड क्लीनिंग भलो भाबरे करिबा दरकार रिप्लेसमेंट एंड रिकमेंडेड इंटरवल पीरियड जदी काम कोन खराब प्रॉब्लम देखौछि ताको रिप्लेसमेंट करिबा दरकार मॉनिटरिंग वाइब्रेशन एंड टेंपरेचर करिबा दरकार टेंपरेचर एंड मॉनिटरिंग ऑफ वाइब्रेशन को मॉनिटरिंग करिया दरकार एडजस्टमेंट और रिप्लेसिंग एज नीडेड आवश्यकता अनुसार हम ताको एडजस्ट करिबा नहले ताको डायरेक्ट रिप्लेस करि परिबा तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म आसिला कोन टाइप्स ऑफ बियरिंग बियरिंग केते प्रकार ना बहुत गुडा बियरिंग अछि सेथु प्रथम बियरिंग देखिबा ना बॉल बियरिंग प्रथम बियरिंग पिले कोन ना बॉल बियरिंग ए जो डायग्राम ता देखुछो एटा कहार बियरिंग ना बॉल बियरिंग ए डायग्राम ता एटा होछि पिले कहार बियरिंग ना बॉल बियरिंग
ball bearing includes spherical ball एथरे देखो spherical ball अछि that transfer the load from the inside to outside and create the motion in the circle से कोन करे ना लोड को इनसाइड रो आउटसाइड कोन करे ना मोशन को सर्किल करे तापर आसिला बॉल बियरिंग ए बॉल बियरिंग रो इंपोर्टेंट पॉइंट कोन सर इट इज नोन एज रोलर टाइप बियरिंग रोल टाइप बियरिंग ताको कहउचंती ये हैंडल करि परिबो बोथ एक्सियल एंड रेडियल लोड को bearing are commonly seen in not bolted application. It used under 150 speed motor torque. It utilizes spherical rolling element to reduce friction. Ball bearing are widely used device like electric motor, fan, and automotive component. कौन कहला सर बॉल बियरिंग रो किछि इंपोर्टेंट पॉइंट को डिस्कशन करले कौन इंपोर्टेंट पॉइंट सर बॉल बियरिंग रो अन्य नाम होची रोल टाइप बियरिंग ए बॉल बियरिंग मोर रेडियल आउ एक्सियल लोड को हैंडल करि थाए ए बॉल बियरिंग कॉमनली देखिया को मिलिबो जोटी नॉट बोल्टेड एप्लीकेशन में 150 रो एचपी अंडर मान तळे 150 रो एचपी मोटर रेटिंग तळ को हमें बॉल बियरिंग को प्रेफर करि परिबा ये यूटिलाइज करि परिबो स्टीयरिंग रोलिंग एलिमेंट आउ फ्रिक्शन लॉस को रिड्यूस करिकि आ बॉल बियरिंग आर वाइडली यूज को जगह रे जेमिति इलेक्ट्रिक मोटर फैन ऑटोमोटिव कंपोनेंट रे व्यवहार करा जाय पारि Note point important कौन सर ball bearing are made of hard material like carbon chromium steel ball bearing को material ले तैयारी ना hard material केमिति example जेमिति carbon chromium steel ball type bearing are used small size DC एटा बहुत सारा competitive exam रे पचारि छी small size DC machine ପାଇଁ generally को bearing को prefer करा जाय तमे ball bearing कहि पारे तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म आसिलान केले कोन ना रोलर बियरिंग ए जो डायग्राम ता देखुछो एटा को टाइप रो बियरिंग सर एटा होची कोन ना रोलर बियरिंग ए रोलर बियरिंग यूज सिलिंड्रिकल और टैपर रोलिंग एलिमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट लोड इवनली कोन कहले ए रोलर बियरिंग को टाइप रो स्टेप जनरली देखिया को ना आज यूज करा जाउची सिलिंड्रिकल मतलब टैपर रोलिंग एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट लोड इवनली ए रोलर बियरिंग रा देयर आर यूज मीडियम साइज मशीन पाए एटा बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पचारि छी को टाइप रो मशीन पाए हमें रोलर बियरिंग को प्रेफर करछु ना मीडियम साइज दीज आर यूज बेल्टेड एप्लीकेशन की कोठी व्यवहार करा जाउची ना जनरली बेल्टेड एप्लीकेशन ने ताको व्यवहार करा जाउची दीज आर यूज इंडस्ट्रियल मशीनरी कन्वेयर रोलर बियरिंग ऑफर हाई लोड कैपेसिटी दैन दैट बॉलर जदि सेम साइज रो मशीन को हमें कंपैरिजन करिबा रोलर बियरिंग हाई लोड कैपेसिटी पाई परिगुट रही आ रोलर बियरिंग बेल्टेड एप्लीकेशन में व्यवहार करा जाउची रोलर बियरिंग को मीडियम साइज मशीन में प्रेफर करा जाउची जेतको इंडस्ट्रियल मशीनरी व्यवहार करा जाउची सब जनरली रोलर बियरिंग को हमें प्रेफर करछि तापर पिले आसिला नेक्स्ट टाइप बियरिंग जहार ना कोन पिले ना स्लीव बियरिंग is sleeve bearing known as plain bearing used where there is space limitation जो जगह रे हमर स्पेस कम अछि लिमिटेशन स्पेस अछि से जगह रे हमें स्लीव बियरिंग को व्यवहार करता इट इज यूज फॉर लार्ज कैपेसिटी ऑफ मशीन सबसे इंपोर्टेंट लार्ज कैपेसिटी मशीन ପାଇଁ को बियरिंग प्रेफर करा जाउची ना सर स्लीव बियरिंग प्रेफर करा जाउची ए स्लीव बियरिंग विथ रिंग लुब्रिकेशन आर यूज्ड फॉर मोटर when very silent running is required जते बेले गोटे मोटर को स्मूथ एंड साइलेंट ऑपरेशन करिवार अछि ना सेते बेले हम जनरली स्लीव बियरिंग को प्रेफर करता तापर आसिला थ्रस्ट बियरिंग तापर आसिला पहले कोन ना थ्रस्ट बियरिंग इन थ्रस्ट बियरिंग आर स्पेशलाइज्ड फॉर हैंडलिंग एक्सियल लोड आर कॉमनली फाउंड इन गियरबॉक्स हेलीकॉप्टर रोटर एंड एक्सियल फैन used where load parallel to the shaft axis on जो जगह रे लोड टा parallel to the shaft axis को थाए सही जगह रे हमें thrust bearing को प्रेफर करूची ई thrust bearing स्पेशलाइज कोन हैंडल करूची एक्सियल लोड आर कॉमन यूज कोट यूज करा जाउची जेमिति कि गियर बॉक्सेस हेलीकॉप्टर रोटर्स एक्सियल फैन में जनरली हमें thrust bearing को प्रेफर करूची वेरी गुड एबे डिस्कशन करिबा मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन बियरिंग रो टाइप्स ऑफ बियरिंग रो जते सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे क्वेश्चंस पड़िछि सब तक डिस्कशन करिबा
समस्त रेडी हो चार सेक्शन में बिट बाय बिट क्वेश्चन रो समस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बियरिंग इन ए डीसी मशीन डीसी मशीन रे मेन फंक्शन कोन बियरिंग रो एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन नंबर बी सपोर्ट द रोटर एंड अलाउ स्मूथ ऑपरेशन ये कम करिवो और रोटर को सपोर्ट प्रोवाइडेड करिवो स्मूथ ऑपरेशन ପାଇଁ क्वेश्चन नंबर 2 which of the following selection criteria of bearing सर जते बेले मो बियरिंग को गोटे सिलेक्शन करूची कोन कोन क्राइटेरिया को ध्यान देबा दरकार एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन नंबर बी सर शाफ्ट साइज एंड दर टाइप ऊपर कोन ना ध्यान देबा दरकार क्वेश्चन नंबर 3 which maintenance activity help extended the life of bearing एमानक मध्यरु को मेंटेनेंस टा कले मोर गोटे बियरिंग रो लाइफ स्पैन टा इंप्रूव हो एक्सटेंडेड हेबे एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सर रेगुलर लुब्रिकेशन एंड क्लीनिंग रेगुलर लुब्रिकेशन एंड क्लीनिंग परिबा द्वारा सर मोर कोन ना बियरिंग रो लाइफ स्पैन टा को इंप्रूव क्वेश्चन नंबर 4 which type of bearing spherical roller element work को टाइप रो bearing हमें spherical roller element रो व्यवहार करू एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बॉल bearing क्वेश्चन नंबर 5 बॉल bearing can support which type of load को टाइप रो लोड पई हमरा बॉल bearing ता सपोर्ट करू एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ रेडियल एंड एक्सियल लोड पे बोथ रेडियल एंड एक्सियल लोड पे बॉल बेयरिंग का सपोर्ट करू क्वेश्चन नंबर 6 रोलर बेयरिंग आर मेनली यूज को जगह रे को टाइप रो मशीन पे रोलर बेयरिंग प्रिफर करा जाउछ एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर मीडियम साइज मशीन एंड कन्वेयर एप्लीकेशन ପାଇଁ जनरली हम रोलर बेयरिंग को प्रिफर करू क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच बेयरिंग आल्सो नोन एज प्लेन बेयरिंग एमान को मध्यरु प्लेन बेयरिंग उठा एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर स्लीप बेयरिंग होची कोन ना प्लेन बेयरिंग क्वेश्चन नंबर 8 स्लीप बेयरिंग आर कॉमनली यूज्ड फॉर Sleep bearing are commonly used for excellent समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर लार्ज कैपेसिटी मशीन ପାଇଁ लार्ज कैपेसिटी मशीन ପାଇଁ हम स्लीप बेयरिंग व्यवहार करू क्वेश्चन नंबर 9 which type of bearing special design handle axial load को टाइप रो बेयरिंग डिजाइन करा जाउची एक्सियल लोड ପାଇଁ एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी थ्रस्ट बेयरिंग को बेयरिंग थ्रस्ट बेयरिंग क्वेश्चन नंबर 10 बेयरिंग आर कॉमनली मेड फ्रॉम व्हिच मटेरियल जनरली बेयरिंग टा को मटेरियल ले तयार होइଥାଏ एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कार्बन क्रोमियम स्टील कोन ना कार्बन क्रोमियम स्टील ले जनरली कोन बेयरिंग मटेरियल टा तयार ए जो बियरिंग रु 10 टा क्वेश्चन डिस्कशन कली कहार केतटा क्वेश्चन ठीक हैला ठीक समस्त चार सेक्शन में मेसेज करो सर एतिकेटा क्वेश्चंस मोर ठीक हैला गोटे मिनिट
वेरी गुड। एबे डिस्कशन करिबा पिले कोन ना शाफ्ट। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कंपोनेंट डिस्कशन करिबा कोन ना शाफ्ट। A shaft is a mechanical component that transfer mechanical power from one location to another location। कौन कहला ना शाफ्ट होची सर मैकेनिकल कंपोनेंट। ये कौन करूची ना मैकेनिकल पावर से ट्रांसफर करूची गोटे लोकेशन नु अन्य को लोकेशन। सेकंड पॉइंट इन ए डीसी मशीन से डीसी मोटर हो कि डीसी जनरेटर हो शाफ्ट प्ले क्रुशियल रोल ट्रांसफरिंग द मैकेनिकल पावर। सर से डीसी मोटर कथा कोंतु कि जनरेटर कथा कोंतु शाफ्ट होची तार मेन इंपोर्टेंट पार्ट जो थिरे कि से ट्रांसफर करि परिबो मैकेनिकल पावर। जदि आमे मोटर ऑपरेशन कथा देखिबा in a DC motor the shaft receive mechanical power from the armature and transmit the load such as pump fan etc। जदि आमे शाफ्ट रो काम कोन देखिबा डीसी मोटर रे सारे शाफ्ट रो काम होची मैकेनिकल पावर आर्मेचर रोटर रो रिसीव करिवो और ट्रांसमिट करिवो लोड को पंप हो से फैन। सेमितिया जनरेटर रे इन डीसी जनरेटर रे शाफ्ट रिसीव मैकेनिकल पावर फ्रॉम द प्राइम मूवर जेमिति के टरबाइन और इंजन को and transmit the armature rotor convert into electrical power। इस शाफ्ट सहायता रे से कोन करिवो ना मैकेनिकल डीसी जनरेटर रे शाफ्ट रो काम कोन सारा शाफ्ट हमरो मैकेनिकल पावर रिसीव करिवो कोठु टरबाइन एंड ट्रांसमिट करिवो आर्मेचर को कोन ना रोटर व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर को से ट्रांसमिट करके दो। तापर आसिला फंक्शन ऑफ शाफ्ट इन ए डीसी मशीन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पार्ट कोन सर फंक्शन ऑफ शाफ्ट रो एक्चुअली काम कोन सर इट रोटेट आर्मेचर एंड कम्यूटेटर। शाफ्ट रो काम होची रोटेट करिवो काहा को रोटर को बा आर्मेचर एंड कम्यूटेटर को। शाफ्ट रो काम होची ट्रांसमिट द टॉर्क एंड द पावर को ट्रांसमिट करिवो। शाफ्ट रो काम होची सपोर्ट द रोटर एंड बियरिंग प्रोवाइडेड करिवो। शाफ्ट रो काम होची कनेक्ट द लोड और प्राइम मूवर करिवो। शाफ्ट रो काम कोन कनेक्ट करिवो लोड एंड प्राइम मूवर को सपोर्ट प्रोवाइडेड करिवो रोटर एंड बियरिंग को ट्रांसमिट करिवो टॉर्क एंड पावर को रोटेट करिवो आर्मेचर एंड कम्यूटेटर। तापरे टाइप्स ऑफ शाफ्ट इज यूजिंग इन डीसी मशीन। डीसी मशीन रे जनरली हम पांच प्रकार शाफ्ट को प्रिफर करूची। डीसी मशीन रे जनरली हम पांच प्रकार शाफ्ट को प्रिफर करूची। गोटे होची सॉलिड शाफ्ट, गोटे होची किड शाफ्ट, गोटे होची होलो शाफ्ट, गोटे होची स्पिंडल शाफ्ट आ गोटे होची फ्लेक्सिबल शाफ्ट। केते प्रकार शाफ्ट अछि ना पांच प्रकार जनरली शाफ्ट देखिया को पाइबा सॉलिड शाफ्ट, की शाफ्ट, होलो शाफ्ट, स्पिंडल शाफ्ट आ फ्लेक्सिबल शाफ्ट। तापर नोट पॉइंट कोन शाफ्ट इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील। एटा बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पचारिछि शाफ्ट टा को मटेरियल ले तयारी सर शाफ्ट टा माइल्ड स्टील ले तयारी। द रोटेटिंग पार्ट सच एज आर्मेचर कोर कम्यूटेटर कूलिंग फैन आर की इनटू इन द शाफ्ट। शाफ्ट को लागि की कोन कोन रहउछि जेमिति आर्मेचर कोर हो कम्यूटेटर हो कूलिंग फैन हो आ कोन ना शाफ्ट की गुरा मध्य लागु एति की जिंस सब लागुछि। तापर आसिला की ये कौन एक की इज ए पीस ऑफ मेटल यूज्ड टू कनेक्ट रोटेटिंग पार्ट जेमिति गियर पुली कपलिंग एलिमेंट टू द शाफ्ट। सी कौन सर की होची गोटे मेटल पीस ऑफ मेटल। ये कौन करूची ना कनेक्ट करूची रोटेटिंग पार्ट का को ना गियर पुली और कपलिंग। एक की प्रिवेंट रिलेटिव रोटेशन बिटवीन टू पार्ट। इट मे बी एनेबल टॉर्क ट्रांसमिशन इन अकर। ये कौन करूची सर की द्वारा हमर प्रिवेंट करूची रिलेटिव रोटेशन बिटवीन दीटा पार्ट एनेबल टॉर्क ऊपर। नोट पॉइंट कौन ना फॉर की टू फंक्शन प्रॉपर्टी बोथ शाफ्ट एंड रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल जेमिति गियर पुली कपलिंग करची मोस्ट की द्वारा कौन एमाने सब कपलिंग होता। तापर आसिला कौन पिले फैन रेगुलेटर। ए फैन regulator is a device used to control speed of the fan in a DC machine।
such as DC motor and DC generator. ए फैन रेगुलेटर साहाय्य रे कोन करथाय ना मोटर रो स्पीड को DC मशीन रो फैन को कंट्रोल करता है जेमति DC मोटर हो DC. The regulator varies the voltage supply to the fan allowing adjustable speed control. Adjustable speed control साहाय्य रे रेगुलेटर कोन करूची ना vary करूची. तापर आसिला नेक्स्ट इंपोर्टेंट आउ लास्ट पार्ट जहार ना होची टर्मिनल बॉक्स. A terminal box of a DC machine is an enclosed component that houses. Terminal box रे कोन कोन रहउची जेमिति आर्मेचर टर्मिनल, फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल, एक्सटर्नल कनेक्शन पॉइंट मध्य रहउची. टर्मिनल बॉक्स कहले कोन बुझलो सर टर्मिनल बॉक्स ऑफ ए DC machine enclosed compartment that house. ए टर्मिनल बॉक्स भितरे आर्मेचर टर्मिनल रहउची, फील्ड टर्मिनल रहउची आ एक्सटर्नल कनेक्शन मध्य. किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करिवा. क्वेश्चन नंबर 1, what is the primary function? What is the primary function of a shaft in a DC machine? A DC machine ने shaft रो primary function कोन? DC machine ने shaft रो primary function कोन? एक्सीलेंट. समस्त करेक्ट आंसर एक नंबर कोन बी ट्रांसफर मैकेनिकल पावर. जे पचारिबो शाफ्ट रो काम कोन मैकेनिकल पावर को ट्रांसफर. क्वेश्चन नंबर 2, इन डीसी मोटर शाफ्ट रिसीव मैकेनिकल पावर फ्रॉम. डीसी मोटर रे जो शाफ्ट रिसीव मैकेनिकल पावर को. एक्सीलेंट. समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्मेचर रोटर रो रिसीव करू. क्वेश्चन नंबर 3, in DC generator shaft receive mechanical power from. DC generator रे जो shaft receive करछे mechanical power को. एक्सीलेंट. समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्राइम मोवर से रिसीव करछे. क्वेश्चन नंबर 4, which of the following not a function of shaft in a DC machine? एमानक मध्यरु कोटा डीसी मशीन ना शाफ्ट रो फंक्शन नो. एक्सीलेंट. समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जनरेट मैग्नेटिक फ्लक्स. इटा शाफ्ट रो फंक्शन. शाफ्ट रो फंक्शन कोन रोटेट द आर्मेचर एंड कम्यूटेटर, ट्रांसमिट द टॉर्क एंड द पावर, कनेक्ट द लोड एज पर फ्रेमवर्क. क्वेश्चन नंबर 5, which of the following type of shaft used in a DC machine? एमानक मध्यरु को टाइप रो शाफ्ट व्यवहार करा जाउची डीसी मशीन में. एक्सीलेंट. समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होलो शाफ्ट व्यवहार करा जाउची. क्वेश्चन नंबर 6, the shaft of a DC machine is commonly made from. DC machine ना शाफ्ट टा कोथि तयारी. एक्सीलेंट. समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी माइल्ड स्टील है. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पर्पस ऑफ की ऑन द शाफ्ट? व्हाट इज द पर्पस ऑफ की ऑन द शाफ्ट? एक्सीलेंट. समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर प्रिवेंट रिलेटिव रोटेशन एंड ट्रांसमिट द टॉर्क. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैन रेगुलेटर इन ए डीसी मशीन? डीसी मशीन ने फैन रेगुलेटर रो काम कोन? एक्सीलेंट. समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल द स्पीड ऑफ द फैन. क्वेश्चन नंबर 9, द टर्मिनल बॉक्स ऑफ ए डीसी मशीन कंटेन. डीसी मशीन ना टर्मिनल बॉक्स रे कोन कोन रहउची? एक्सीलेंट. समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आर्मेचर टर्मिनल रहउची, फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल रहउची, एक्सटर्नल कनेक्शन पॉइंट रहउची. क्वेश्चन नंबर 10, which part of the DC machine connected shaft and rotating during operation? एक्सीलेंट. समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आर्मेचर. डीसी मशीन नो को पार्ट रे हमर ऑपरेशन होउची शाफ्ट रो ऑपरेशन रोटेट होउची ना आर्मेचर. एथि सहित तमर कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन ए जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन क्लास नंबर 3 टा
क्लास रे तुमको अपलोड कले पाखा पाखी 1.5 घंटा रु 2 घंटा वीडियो रे तुमको कंप्लीट कर जो माने भी क्लास को लास्ट पर्यंत देखिछ समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू रहुची जय जगन्नाथ समस्त प्रैक्टिस करथिबो एवं रिवीजन मध्य